ઓકે, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અવાજ આવે છે મારો? યસ ચેતુલભાઈ. ઓકે સ્લો આવે છે. અચ્છા, સ્લો આવે છે. I can hear you clear. અચ્છા, તમારો વોલ્યુમ કદાચ ઓછો હશે. ના, ફૂલ વોલ્યુમ છે. હલો હલો, સંભળાય છે બરાબર કે? હલો. Yeah, yes, I can hear you clear. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે. So I think we will start. So we'll start with Mangalacharan. We'll start with one Naukar. Namo Ariyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loe Savvasahuram, Eso Panchanamukkaro, Savva Pava Parasano, Mangalarancha Savvesim, Padamam Havai Mangalam, Raga Dvesha Vijetaram, Gnata Viswavastunam, Sakra Pujya गिरामे सम तीर्थे संस्कृतिमस्महे पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृसे निर्विशेष नमस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So we'll start with today's class with the Bara Vrats. Last time we discussed the Chavashik Kriyas, and in this session we will revise the 12 Vrats of Shravaks. So these 12 Vrats of Shravaks, they are also known as Desh Virti Vrats. So Jeev, after achieving Samyak Darshan, that is the fourth Gunastanak, on the account of Upsam Bhav, Samvek Bhav, and Nirved Bhav, he now wants to renounce the sansar and take Diksha. And he wants to now perform the dharma in the form of Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra, and Samyak Tap. But due to whatever obligations in the sansar, he's not able to take Diksha. Therefore, our Shastra has given the Vrat of partial renunciation. These are called the Desvirti Vrat. So by performing the Desvirti Vrat, by taking these 12 Vrats of Shravak, one can reach maximum 5th Gunastanak. So a Shravak can reach maximum 5th Gunastanak. After the 5th Gunastanak, you have to take Diksha and you have to take the Sarva Virti Vrat to reach the 6th Gunastanak. So Samyak Darshan, right? That is the 4th Gunastanak. I just wanted to explain what is Samyak Darshan. So there are 5 Lakshans of Samyak Drashti Jiv. There is Upsam Bhav, there is Samvek Bhav, there is Nirved Bhav, there is Astikya, and there is Anukampa. So if you have all these 5 Lakshans, then you are at the 4th Gunastanak. If you do not have any one of these 5 Lakshans, then you are not on the 4th Gunastanak and you are on the 1st Gunastanak. The 2nd and 3rd Gunastanak are the intermediary Gunastanak, and you do not stay in that Gunastanak. You either are on the 1st Gunastanak or you are on the 4th Gunastanak. So what is Upsham Bhav? The first Lakshan of Samyak Drashti Jiv is Upsham Bhav. So Upsham Bhav, the simple meaning is Rag Dvesh ki Mandata. So person who has got very little Rag and Dvesh, very little attachment towards the Parpudgal, that is called Upsham Bhav. Second is Samvek Bhav. What is Samvek Bhav? So second Lakshan of Samyak Drashti Jiv is Samvek Bhav. It means tremendous Ichha for Moksha. Well, he wants to now go Moksha. That is called Samvek Bhav. Third is Nirved Bhav. Nirved Bhav means he now wants to renounce the sansar. He feels this sansar is like a jail, like a prison. And he feels this sansar is Dukhrup, Dukhmay, and Dukhanubandhi. And he wants to take Diksha. That is a Nirved Bhav. The fourth Lakshan is Astikya.
आस्तिक्य मीन्स भगवान के वचन पर पूर्ण श्रद्धा. So that is called astikya. And the fifth and the last lakshan of Samyak Drashti Jeev is Anukampa. That means he has kindness in his heart towards the Dukhi Jeev, towards the less fortunate Jeev. So these are the five lakshans of the Samyak Drashti Jeev. So you have to think for yourself that do you have all these five lakshans? If you have these five lakshans, that means you are on the fourth Gunastanak. And now you have to take the vrats of Virti to reach the fifth Gunastanak. And these are called the Deshvirti vrats or the Bara vrats of Shavak. So in this Bara vrats of Shavak, it's mostly I want to take the sutra earth of some of the gathas of Vanditu Sutra. Because Vanditu Sutra describes this Bara vrats of Shavak in great details. It describes the atichars in this Bara vrats. So what are the Bara vrats of Shavak? So the eighth gatha of Vanditu Sutra is Panchana Manuvayanam, Gunavayanam cha Tina Mayare, Sikkhanam cha Chauram, Padikame Desyam Savam. So Panchana Manuvayanam means પાંચ અનુવ્રત. Gunavayanam cha Tina Mayare means or three gunvrats. Sikkhanam cha Chauram means ચાર શિક્ષાવ્રત. And Padikame Desyam Savam, it means if I have committed any of the atichars, there are 124 atichars given in Vanditu Sutra. So if I have committed any of the atichars out of 124 atichars, I am doing parikamanu or I am doing pratikaman. So when we are reciting this Vanditu Sutra in pratikaman, you have to make this bhav. You have to think about all the atichars that you have performed, for the day and for 14 days, or if you are doing chaumasi for 4 months, and then you have to do parikamanu by heart, by your bhav. So let's discuss all the 12 vrats. So the first vrat is Sthul Pariman Virman vrat. So the first 5 vrats of Shravak are the 5 anuvrats. So if you know, we have covered in the Yoga Shastra, the first step is yam. And in the first step, we said that first step is 5 anuvrats of Shravak and 5 mahavrats for Sadhu Bhagavans. So in order to be eligible for the first step, you have to go to Guru Maharaj Sahib and take at least the 5 vrats, 5 anuvrats. So this is the most basic requirement for the yoga sadhana. If you do not take the 5 anuvrats of Shravak, then you cannot move to the second step of Niyam and Pachkan, and you cannot make a progress in your life. So first and foremost, and the most important thing is you have to go to Guru Maharaj and take this 5 vrat. So in earlier times, our Shravaks used to go to either Bhagwan or either go to Guru Maharaj Sahib and take this vrat. So in Uttaradayan Sutra, there is a story where Shrenik Maharaja takes the Bara vrat from Bhagwan Mahavir. Even in Yoga Shastra, Kalikal Sarvagnya has written that Kumarpal Maharaja has taken the Bara vrats from Kalikal Sarvagnya. Similarly, there are lots of other Shravaks like Vastupal Tejpal, Dhanna Shravak. All these are Bara Vratdhari Shravaks. So all these Shravaks, they are all on 5th Gunastanak in their life. So let's discuss the first Anuvrat, the Sthul Pariman Virman Vrat. So this Sthul Pariman Virman Vrat is mostly deals with the Jeev Hinsa of Tras Jeevs. It does not deal with the Jeev Hinsa of Sthavar Jeevs. So what is Tras Jeevs and what is Sthavar Jeevs? I think you all might know what is difference between Tras and Sthavar Jeevs. But just to give a small explanation, all the Ekindriya Jeevs are mostly Sthavar Jeevs. And all the Jeevs from Beindriya to Panchindriya, they are all Tras Jeevs. So this vrat is mostly dealing with the hinsa of Jeevs from Beindriya to Panchindriya. So by taking this vrat, you take a niyam that you will not cause any violence to any of the Tras Jeevs knowingly or unknowingly. The second thing is you will not beat animals, you will not cut their organs, you will not injure them in any ways, you will not put heavy loads on them, and you will give them food and water without any delay, and you will not ill-treat them. So that what it means, vah bandha chaviche, right? Vah bandha means vad, banjan, or chedan bhedan. So that's the literal meaning of this vrat. Ai bhare bhat pane vuche hai, matlab you are not putting more load
on the Jeev and giving them food and water in the timely manner. Um, and the third most important thing in this vrat is related to medicine. Now, as we discussed in the last session, that most of these medicines, like allopathic medicines, there are lots of experimentation on the Trasjivs. There are experimentation on rats, monkeys, pigs, etc. So if you are ill and if you have to take this medicine, then you have to take this medicine with a grieving heart. So you should have repentance in your heart while you take the medicines. So these are the three main things in this first vrat, Sthul Pranatipat Vinman Vrat. So one thing I wanted to mention is, let me know if you are interested in taking any of these vrats. I have got a book written by Dhirubhai Panditji that describes each of these vrat in much more details. And the book has got, for each vrat, it has got 20 different points. And what you have to do is you have to tick mark the points that you think you can implement, and you have to cross the points you think you cannot implement. So, for example, in the Sthul Pariman Vinman Vrat, there are things like not using insecticides, or not doing abortion. All those are the hinsa of Trasjivs. So there are at least 20 points written by Dhirubhai Panditji, and so if you are interested in taking this vrat, I can give you this book. The book is in Gujarati, so I can translate it for you. And then you can tick mark whatever you can follow in life. And then you can go to Guru Maharaj Sahib and you can show the book. And then by Agnya of Guru Maharaj Sahib, you can take this vrat. So in most of the times, it's not possible to follow all the 20 items that are listed, but you can follow 10 or 15 items, and that is still good, and you can still take this vrat by the Agnya of Guru Maharaj Sahib. So that is the... So Chaital, those all the 20 items are related to all the 12 vrats, or just the first Anuvrat? No, just first Anuvrat. So there are it is a complete book. So there are at least 20 items for the first vrat, around 20 items for second vrat. Now because all these things like Panditji has thought about our daily life, and he has written all these points after thinking. So it's really good book. It is one of the best books I have seen regarding the 12 vrats. But if you are not able to take all the 20, that's fine. Just tick mark whatever you feel you can take, and then go to Guru Maharaj Sahib and talk to Guru Maharaj Sahib and just show the book. And if Guru Maharaj Sahib thinks that is good enough, you can take the vrat. So you can follow whatever you can in this vrat. What are some of those things, Chaital? You are saying that some of the things we won't be able to do, like what are the kind of hinsa we do that we won't? Yeah, तो ना अभी ना ऐसा है ना कि जैसे स्थूल परिमाण विरमण व्रत, right? It deals with the hinsa of Trasjivs. So one of the things is Ratri Bhojan is also hinsa of Trasjivs. To be honest, it's not only hinsa of Sthavar Jivs. It's also hinsa of Trasjivs, right? For example, just imagine, right? Ratri Bhojan itself is a hinsa of Trasjivs, but for example, in the night you are turning on the gas, the stove. There are so many Trasjivs in the environment. You are killing this Trasjivs. So if you are eating the food at night, you are mostly turning on the gas, right? So all those kind of things might be very difficult, because in winter for us, the sunset is at 5:30. So we might have to do Ratri Bhojan. So there are things that we may not be able to follow. And that's what, some things are very, very difficult to follow, especially in winters. But try to follow as much as you can. All these three things I have written here are this given in Vanditu Sutra. And these three things I think are easy to follow. You usually do not beat animals, or you do not cut their organs, you do not injure them, you give them food and water. So these are all the easy things to follow. And if you are already following these things, then I think you should take the vrat, because taking vrat is more important, because only after taking vrat you will be in the Virti Dharma, and then you can move from the fourth to fifth Gunastanak. Okay. But yeah, if you are interested, let me know. It's in Gujarati. Not everyone knows Gujarati, but I will be happy to share the book. I can email the book, and if you know Gujarati, you can read it.
If you do not know Gujarati, then let me know. I will translate each of the 20 items in English, and you can follow. Yeah, that would be great, Chaital, if you can share the whenever you have time. Please share. Okay, sure. Yeah. Also, I had a question. How long would the vrat be for? Like lifetime, or is depends on us? Like, Yeah, so that is a good question. So the smallest amount is 1 year. okay, So, yeah, so all this 12 व्रत तो मिनिमम अगर संवत्सरी से संवत्सरी होता है तो at the so when you are taking vrat, for example, if you are taking vrat today, it basically goes up till samvatsari, and then we say after samvatsari the new year has begun for us, like in terms of prayashit and pachkan. So you can take vrat up till samvatsari, and then after samvatsari you can reevaluate yourself, and you can add or subtract, and then you can again take the vrat for next year. But all these Shravaks, they had taken lifetime vrats, like Shrenik Maharaja and all those Shravaks. They didn't take vrat for a year. They took the life vrat for the whole life. So if you want, you can take vrat for the whole life, but the minimum is you have to take vrat for 1 year. okay. Thank you. Chaital, a question, related question. So we say this, all this Raja Maharaja, Shrenik Raja, Kumarpal Raja. How can they take this kind of vrat, considering that they have to indulge in wars and warfares and different kind of things as a king, right? So how it is possible for them to take this kind of route where their daily activities, or not daily, but the routinely they have to engage in warfares. Yeah, so that is a very good question. So if you know Kumarpal Raja, the vrat he took regarding the Sthul Pranatibar Virman vrat. So he took the vrat that in Chaturmas, in 4 months, he will not go to the war. So that was a very, very big vrat. Just imagine the outside Raja, they also knew about this vrat. And there was one Muslim Raja who actually came for war because he knew that Kumarpal Raja will not go to the war. Then our Guru Maharaj Sahib had to talk to the Raja, Muslim Raja, और उसको समझाया और फिर war करने से रोक लिया. तो मतलब Kumarpal Maharaja also used to take this kind of vrat, but they used to take this vrat like for Chaturmas, for 4 months they won't go to the war. So similarly, Shrenik Maharaja, right? So they don't have to take this vrat like for the whole life. They might have omitted. I don't know about Shrenik Maharaja, but they might have omitted this sentence. So again, they don't have to follow each and everything. They will take the vrat according to what they talk to Guru Maharaj Sahib, and उनकी आज्ञा से वो व्रत लेते हैं. तो they might have to tailor the vrat for themselves. तो kingdom के रक्षा के लिए तो they might even omit this kind of things within the vrat. Okay, that makes sense actually. Yeah. तो इसलिए मतलब ये व्रत ना मतलब हम खुद नहीं ले सकते. यू हैव टू गो टू गुरु महाराज साहब. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो मैंने ये व्रत के बारे में आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड वाज आस्किंग हिम कि इंडिया में कितने लोग ये व्रत लेते हैं. तो मेरे पापा ने बोला कि बहुत लोग लेते हैं ये व्रत. मतलब ही नोज 100 पीपल हु हैव टेकन दिस व्रत, मतलब ऑल द 12 व्रत. तो इंडिया में तो इट्स वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी पॉपुलर. इंडिया में तो लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं एंड दे टेक दिस व्रत. यूएस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली. यूएस में लोगों को पता नहीं है कि ये व्रत लेना चाहिए. बट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ जैन धर्म, राइट? अभी वीरती धर्म इज द फाउंडेशन ऑफ जैन धर्म. विदाउट वीरती धर्म देयर इज लॉट्स ऑफ आश्रम ऑफ कर्मस. सो व्रत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर धर्म. चेतल भाई, एक और चीज पूछनी थी. लेट्स से वो रात्रि भोजन का व्रत अगर लेते हैं तो 1 साल का, लेट्स से जस्ट टू ट्राई इट आउट, तो उसमें अगर हम ये भी कह सकते हैं, राइट, कि 1 महीने में एटलीस्ट इतने दिन मैं खाऊं तो छूट है, तो अकॉर्डिंगली भी वैसे भी व्रत ले सकते हैं, राइट? डेफिनेटली. हाँ, मतलब ये व्रत ना इट कैन बी टेलर्ड टू योर नीड्स. और फिर द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि गुरु महाराज साहब हाँ बोलने चाहिए, राइट? या मतलब क्योंकि ये व्रत ना गुरु महाराज साहब को देना है. ओनली सर्ववीरती कैन गिव दिस व्रत टू अ श्रावक. कोई और ये व्रत नहीं दे सकता.
क्योंकि सर्वव्रती जिसने जीवन में स्वीकारा है उनको ही अनुमति है कि वो श्रावक को ये व्रत दे पाए। तो इसलिए यू हैव टू, वो जो बुक है ना, आई थिंक आई विल सेंड इट टू एवरीवन, आई विल आल्सो कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। और फिर या टिक मार्क, और फिर उसके बाद अगर जब इंडिया जाओ या इवन यू कैन कॉल ओवर द फोन, अगर कोई महाराज साहब फोन पे बात करते हैं, और फिर या फिर अपने रिलेटिव्स के पास से भेजो महाराज साहब के पास, और फिर महाराज साहब देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, एंड ही माइट कम बैक सेइंग दैट नहीं ये बराबर नहीं है, ये चेंज करो, ये चेंज करो, यू नो, ही माइट कम बैक। Okay. या Okay. Thank you. Okay, so moving on, second Anuvrat is Sthul Murshabad Vinman Vrat. So this Vrat is relatively easier to take. So 12th Gata in Vanditu describes the Atichar in this Vrat. Sahasa Rasadare Mosu Ase Kuleya Biye Vasayare Parikamidesiam Sovam. So by taking this Vrat, it basically says you will not say false, right? Tum jhoot nahi bologe. You will not say false related to unmarried girls, houses, etc. फिर यू विल रिटर्न द मनी टू द राइटफुल ओनर। अगर तुमने बैंक से पैसा लिया हो तो फिर वो पैसा का चोरी नहीं करोगे, यू विल रिटर्न द मनी बैक टू द बैंक। यू विल नॉट ग्रैब एनीवन्स प्रॉपर्टी, यू नो, यू विल नॉट इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ योर प्रॉपर्टी, यू विल नॉट गिव एनी फॉल्स एविडेंस। फिर अनदर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, इज यू विल नॉट रिवील सीक्रेट्स ऑफ अवर वाइफ एंड फ्रेंड्स टू अदर्स। अभी क्या होता है कि व्हेन वी आर गॉसिपिंग, हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम नोइंगली या अननोइंगली कोई सीक्रेट बोल देते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया। सो दैट इज नॉट अलाउड। सो वो स्थूल मुर्शाबाद विनवन व्रत में आ जाता है। तो यू हैव टू वेरी 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 केयरफुल व्हेन यू आर स्पीकिंग, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड ये चीज ना प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। यू नो, इफ यू प्रैक्टिस लिटिल बिट, फिर हर एक बात में तुम सोचोगे कि आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, एनी सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। And the last thing is you will not maintain any duplicate or false accounts या do any false documents. So this is the Sthul Murshabad Virman Vrat, and I think it's relatively easy to take. The third Vrat is Sthul Adattadan Virman Vrat. Adattadan matlab chori. So 14th Gata in Vanditu describes the Atichar in this Vrat. Tena hada pahoge tappadi ruve viruddha gamraya kurtul kurmane parikami desiam savam. So by taking this vrat, you take a niyam that you will not commit any theft. तो उसमें robbery, stealing, smuggling and thefts related to tickets, वो सब कुछ आ जाता है। Now smuggling, चोरी तो हम करते नहीं है, but thefts related to tickets is very important in India. You know, you might have noticed people travel in trains or buses without tickets. People do not pay toll in toll naka. You know, they just pass, or they pay less money at the toll naka. तो वो सब इसमें आ जाता है, स्थूल अरतान विरमन व्रत। एंड फिर डिटेल्स में लिखा है कि इफ यू टेक दिस व्रत यू कमिट टू फॉलोइंग 5 ब्रीचेस। यू विल नॉट गिव रेफ्यूज टू अ थीफ, यू विल नॉट रिसीव एनी स्टोलन गुड्स। अगर तुमको पता है कि कोई चोरी का माल है तो तुम उसको खरीदोगे नहीं। तो यू विल नॉट एनकरेज थीव्स इन एनी वेज। फिर यू विल नॉट डील इन एडल्ट्रेटेड कमोडिटीज। अगेन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। यहाँ पे तो इतना एडल्ट्रेशन होता नहीं है, पर इंडिया में आई हैव सीन कि तुम अगर कुछ खरीदने जाओ, अगर तुम गेहूं का आटा या फिर राइस या फिर इवन ऑयल, इट इज ऑलवेज मिक्स्ड विथ यू नो inferior quality products. Like oil तो पता है कि sunflower oil या canola oil, it is never 100% pure. It is always mixed with cotton seed oil क्योंकि वो सस्ता होता है। तो अगर if you are doing business, then all these things come into picture. So you will not do any mixing or adulteration. You will not engage in any anti-governmental activities या फिर कोई भी activities that is against your religion, and you will not use any false measures and weights. So ये सब mostly businessmen के लिए आ जाता है, but this vrat is again, I think it's relatively simple to take. Chaital, you know, a question related to this modern context. Do we have any guidelines on that somebody is doing a business to take, you know, like in today's age, at least in the politics, we have this debate about a lot of businesses taking enormous amount of profit, especially in the medicine and you know the essential things with which people need. So do we have any guidelines on those kind of things, that if you are doing those kind of business, you should not take that much of profit,
or even it's by the legal means, right? They are not Yeah. they are not robbing anyone. They are in the market, they are asking the money, you're paying the money, and they're everything they're doing legal, but they're just charging a lot of money. या मतलब there are guidelines. I think we'll take that topic. एक बार ना ये ना श्राद्ध विधि प्रकरण में काफी डिटेल में ये सब है, एंड आई हैव नॉट रेड एवरीथिंग, पर मेरे को पता है कि काफी डिटेल्स में ये सब चीजें हैं, और स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं, राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम विद डॉक्टर्स. और इंडिया में तो क्या होता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस लेता है और फिर दे डू लॉट्स ऑफ टेस्ट दैट आर नॉट नेसेसरी, और उसमें पैसा कमाते, गरीबों का पैसा चूसते हैं, एंड दैट इज ऑल वेरी वेरी बैड. मतलब ये सब हमारे जैन धर्म या जैन डॉक्टर्स के लिए शोभा नहीं देता है, राइट. मतलब हमको तो अनुकंपा किया है, हमको तो दूसरे जीवों की दया करना है. अगर ये सब नहीं है तो चौथा गुणस्थानक भी नहीं है. जस्ट सोचो, इमेजिन वन ऑफ द लक्षण ऑफ सम्यक दृष्टि जीव इज अनुकंपा, राइट. मतलब यू हैव टू हैव काइंडनेस और दया टुवर्ड्स द दुखी जीव्स. अगर तुम गरीब लोगों का पैसा ले रहे हो और उनको ऐसा ज्यादा भाव बढ़ा के या गलत टेस्ट करके, देन यू आर मिथ्या दृष्टि, टू बी ऑनेस्ट. मतलब यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि तुम कहाँ पे हो और तुम कितना कर पाते हो. पर या हमारे शास्त्र में तो बहुत डिटेल में ये सब है. तो वी कैन या कभी ना श्राद्ध विधि प्रकरण एक बार लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ना श्रावक के आचार लिखा है. श्राद्ध विधि प्रकरण क्या है? बेसिकली श्रावक के आचार है, और उसमें इतना डिटेल में, उसमें पूरा ग्रंथ है, उसमें इतना डिटेल में सब कुछ लिखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आचार है श्रावक के और क्या अनाचार है. तो कभी वो टॉपिक लेंगे. पर डॉक्टर्स के लिए तो दे कैन डू लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स. वो गरीबों की दया कर सकते हैं. इवन साधु महाराज की, अपने काफी जैन डॉक्टर्स तो साधु महाराज को तो कितना हेल्प करते हैं. कभी भी रात को 2-3 बजे साधु महाराज को कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने जैन डॉक्टर्स भाग के चले जाते हैं और उनको पूरा उनकी वैयावच करते हैं. तो दे कैन डू लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स अगर तुम डॉक्टर के प्रोफेशन में हो. पर या मतलब उनको खुद को सोचना चाहिए गरीबों का कैसे टेक केयर करे. ओके. तो ये थर्ड व्रत था, थर्ड अनुव्रत. और फोर्थ अनुव्रत इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो है स्थूल मैथुन वीरमन व्रत. तो 16 गाथा इन वंदितु describes the अतिचार in this व्रत. अपैगा इत्तर अनंग विवाद तिवरुणागे चौथे वसयारे परिकमे देशियम सोवम. So it says three things, right? You will not maintain intimate relationship with any other woman, unmarried girls, or वो सब. You will only have physical relationship with your wife or spouse, and you will not see and hear things that will waver you away from this vrat. So these are the three most important things of this vrat, and I think lots of people can take this vrat. It's not that difficult, but this is very very important vrat. और फिर लास्ट टाइम मैंने बोला था कि when we are in this topic, I also wanted to talk about कि महाराज साहब के क्या आचार है, ब्रह्मचर्य के क्या आचार है. तो आचार्य महाराज साहब के 36 गुण जो होते हैं, उसमें 9 गुण्स आर रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य. नवविय ब्रह्मचर्य गुत्तिधरो, दैट इट डिस्क्राइब्स द 9 वार्ड ऑफ ब्रह्मचर्य. तो व्हाट आर द 9 वार्ड ऑफ ब्रह्मचर्य फॉर साधु भगवान्स? तो पहला है कि not stay alone where other women are staying. Not talk to women in a passionate manner. A man should not occupy a seat previously occupied by a woman for 48 minutes, and woman should not occupy a seat previously occupied by a man for 3 prahars, that is 9 hours. One should not look at woman with intuiting glances. One should not sit close to a wall where couples are sleeping or engaging in passionate conversation. तो ये चीज मैंने देखा है. अगर ना मतलब एक बार महाराज साहब उपाश्रय में आए थे, और उपाश्रय में क्या हो रहा था कि दूसरा घर एकदम पास में था. तो फिर महाराज साहब वहां से चले गए रात को ही. रात को उनको विहार नहीं करना होता है, पर ये अपवाद मार्ग में भी उनको विहार करना पड़ा, क्योंकि उनको पता चला कि उनके जो शिष्य है उनको खतरा है, क्योंकि वो दूसरे घर इतने पास में थे कि दे कैन हियर देम टॉकिंग. तो वो लोग ने रात को विहार कर दिया और वो दूसरे जगह पे गए.
तो दैट इज व्हाट अपवाद मार्ग में भी वो करना चाहिए, वो अपना आचार है। फिर उसके बाद वन शुड नॉट रिमेंबर एनी प्रीवियस पैशनेट एनकाउंटर्स। फिर ये 3 चीज आर डिफिकल्ट। वन शुड नॉट ईट टेस्टी फूड्स, तो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यू शुड नॉट ईट टेस्टी फूड्स, और यू शुड नॉट ओवर ईट। और फिर द लास्ट इज यू शुड नॉट एड ऑन योर बॉडी इन एनी वेज, मतलब यू शुड नॉट यूज मेकअप और ज्वेलरी। तो ये फूड के बारे में आई हैव सीन सम साधु महाराज कि वो लोग ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए वो लोग कंटिन्यूस तप करते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा, अगर बॉडी को पूरा सुखा दे तो कहीं पे भी कोई भी विचार नहीं आ पाएगा, कोई भी खराब विचार नहीं आ पाएगा। तो ये साधु महाराज का काफी बार तप इसलिए करते हैं कि वो लोग बॉडी को सुखा दे तो कहीं पे भी उनको एक क्षण के मात्र भी खराब विचार ना आ जाए। सो दैट इज द रीजन दे डू तप। तो दिस आर द 9 वार्ड ऑफ ब्रह्मचर्य। And the last anuvrat is very important, is the most important anuvrat, is the Sthul Parigrah Virman Vrat. So, we discussed during the Chaavashyaks कि there are 4 kashayas, और उसमें लोभ कषाय is the most difficult of all the kashayas to be removed. तो अपने स्वजलन क्रोध, स्वजलन मान, स्वजलन माया और स्वजलन लोभ, उसमें से स्वजलन लोभ is last to be removed. तो शपथ श्रेणी में क्या होता है कि पहले स्वजलन क्रोध रिमूव हो जाता है। तो 8th गुणस्थानक के एंड में दे रिमूव द स्वजलन क्रोध। फिर 9th गुणस्थानक के बिगिनिंग में दे रिमूव द स्वजलन मान, और 9th गुणस्थानक में एंड में दे रिमूव द स्वजलन माया। पर लोभ तो वहां पे भी रहता है, और ओनली इन द 10th गुणस्थानक दे आर एबल टू रिमूव द लोभ। तो लोभ कषाय ऐसा है ना, ग्रीड, पैसे का ग्रीड, अटैचमेंट, पर पुद्गल के साथ अटैचमेंट, बेसिकली वो दैट इज इट्स कॉल्ड परिग्रह। तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। तो इसमें क्या है, स्थूल परिग्रह विनमन व्रत में देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पोजेशंस। सो धन कित्त वत्तु रूप सुवर्ण कुये परिमाणे दूपये चौपयम्य। तो दैट डिस्क्राइब्स 9 टाइप ऑफ पोजेशंस। सो व्हाट आर द 9 टाइप्स ऑफ पोजेशंस? पहला तो मनी, राइट, रियल मनी, दैट इज वेल्थ। फिर फूड ग्रेन्स, फिर ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, हाउसेज, शॉप्स, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, फार्म लैंड, सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पर्ल्स, सब कुछ आ जाता है। फिर घर में वेसल्स होते हैं, घर में फर्नीचर होते हैं, तो सब कुछ आ जाता है। फिर एनिमल्स, राइट, प्रीवियस टाइम्स में एनिमल्स होते थे। और सर्वेंट्स, तो घर में कितने लोग काम कर रहे हैं उसका भी लिमिट रखना चाहिए। सो दिस आर द 9 टाइप्स ऑफ पोजेशंस। तो इन दिस व्रत यू हैव टू पुट लिमिट ऑन ऑल दिस 9 टाइप ऑफ पोजेशंस। तो आई वॉज डिस्कसिंग दिस व्रत विथ महाराज साहेब लास्ट ईयर। तो उन्होंने बोला कि यू डोंट हैव टू टेक individual like each and every possession. You can take a combined possession, like and you can keep the limit really high. For example, you can take the vrat कि I will not accumulate wealth about $20 million या $50 million या जो भी तुम्हारा capability है। But the most important thing is you have to take this vrat. Or after you take this vrat, if you earn money beyond the vrat, तो फिर जो भी ऊपर मनी है यू हैव टू यूज इन धर्म क्रिया बाय गुरु महाराज साहब आज्ञा। वो जहां पे भी बोले वहां पे वो मनी यूज कर लेने का। एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस इज अ कंबाइंड वेल्थ, मतलब इफ यू गिव दिस मनी और वेल्थ टू योर वाइफ, योर चिल्ड्रन और योर पेरेंट्स, इट्स स्टिल काउंटेड एज योर पोजेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है। तो मैं छोटा था, मैं एक शिविर में गया था मध्य प्रदेश में, कुमारपाल विशा के और पापा के साथ। तो मैं तो स्टूडेंट था और पापा और कुमारपाल भाई वो शिविर ले रहे थे मध्य प्रदेश में। तो मेरे को कुमारपाल भाई ने बोला ये इंसिडेंट कि उनके खुद के भाई, ही इज इन डायमंड बिजनेस, और डायमंड बिजनेस में तो कितना वेल्थ होता है, कितना कमाते हैं। तो उस जमाने में आज से 20 साल पहले उन्होंने ये व्रत लिया, उनके भाई ने। तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं 5 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा वो जमाने में। तो महाराज साहब ने बोला 5 करोड़ इज वेरी स्मॉल अमाउंट, टेक अ बिगर वैल्यू। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है 50 करोड़।
तो 5 करोड़ का 50 करोड़ किया। तो अभी ऐसी सिचुएशन है उनकी कि उनको 50 करोड़ तो कब के हो गए, तो अभी वो सब कुछ धर्म में यूज करते हैं। मतलब Wow. जस्ट थिंक कि 50 करोड़ वो जमाने में बहुत थे 20 साल पहले, पर अभी, और उन्होंने तो उस समय तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा, पर अभी तो उनको काफी बड़ा बिजनेस हो गया। तो अभी तो 50 करोड़ तो उनको ऐसे ही मिल जाते हैं डायमंड बिजनेस में। तो ही यूजेस एवरीथिंग अबाउ 50 करोड़ इन धर्म क्रिया। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे श्रावक्स हैं अभी भी। तो या व्हेन यू आर टेकिंग दिस व्रत, थिंक बिफोर यू टेक। एंड मेरा सजेशन इज, इवन महाराज साहब ने बोला कि पुट अ लिमिट हाई, कि फिर पीछे जाके तुमको दुख नहीं हो, फिर पीछे जाके तुमको लगे नहीं कि ओ मैंने ये व्रत क्यों लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेना हो तो $100 मिलियन का भी ले लो, पर लो, मतलब दैट इज द मेन थिंग। टेक दिस व्रत, otherwise you won't be in virti dharma. You have to take this vrat. Okay, Chetal bhai, when it comes to food and grain, how do we take this व्रत? How does it work? नहीं, इसलिए ना, मतलब ये तो शास्त्र में ऐसा लिखा है, पर मेरे ख्याल से जस्ट कंबाइन योर वेल्थ, दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे। क्योंकि पहले जमाने में 9 टाइप ऑफ पोजेशंस होते थे, पर अभी क्या है कि अपने अपने पैसे, इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू फूड ग्रेन्स और वो सब। हमारे पैसे शेयर मार्केट में होते हैं, हमारे पैसे डिफरेंट चीजों में होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंबाइन एवरीथिंग, एंड देन फिर कंबाइन करके तुम उसका वैल्यूएशन करो, मार्केट वैल्यू करो कि तुम या तुम्हारा करंट वैल्यू कितना है। Okay. या But मतलब या एक क्वेश्चन अगेन, टाइम नु हसे ने, इज दिस आल्सो टाइम रिलेटेड एज वेल? या डेफिनेटली, मतलब यूजुअली ये व्रत लाइफ टाइम के लिए होता है, Okay. परिमाण व्रत। पर इफ यू वांट टू टेक इट फॉर अ ईयर, देन महाराज साहब से बात करो। अगर महाराज साहब अगर आज्ञा दे तो यू कैन टेक इट फॉर अ ईयर, पर यूजुअली लाइफ टाइम के लिए है ये व्रत। अच्छा, ओके। या तो दिस इज इंपॉर्टेंट व्रत, पर या जस्ट कंबाइन ऑल द वेल्थ और फिर उसका मार्केट वैल्यू करो। मतलब यू कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट, मैंने तो अपने लिए स्प्रेडशीट बनाया है। तो यू कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट एंड यू कैन कीप अ टैब एवरी ईयर का टैब, कि ठीक है, मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना है, यू कैन कीप अ टैब। फिर उसके बाद जो दिस आर 5 अनुव्रत, सो 5 अनुव्रत आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहले यम में 5 अनुव्रत आ जाते हैं, तो 5 अनुव्रत आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो योग साधना में नियम और पचखांड में है, जो उसमें वो बाकी व्रत आते हैं, जो 12 व्रत में जो बाकी 7 व्रत है, वो इसमें सेकंड स्टेप में आते हैं। तो पहला गुण व्रत है दिशा परिमाण व्रत। सो दिस इज वेरी सिंपल व्रत टू टेक। गमनसौ परिमाणे दिशा शुद्धम एवं तिरियम च वुसिधियम श्रद्धा परममि गुरुवै निंदे। So by taking this व्रत, you put limits on the direction, right? Basically miles. तो इसमें क्या है कि इंडिया में तो लोग क्या करते हैं कि दे पुट लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंट्रीज दे विजिट इन द लाइफ टाइम। तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने व्रत लिया है कि दे वोंट विजिट मोर देन 20 कंट्रीज इन देयर लाइफ टाइम। तो यू कैन टेक दिस व्रत दैट वे। और फिर कुमार पार्वती शाह है, उन्होंने तो नियम लिया है कि वोंट गो आउटसाइड इंडिया अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो मतलब ऐसे भी श्रावक है जो इंडिया के बाहर जाने का भी व्रत लिया है। तो दैट इज इजियर वे टू टेक। मतलब इफ यू लिमिट द नंबर ऑफ कंट्रीज, इट इज मच इजियर टू टेक। फिर उसके बाद द लिमिट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, एंड यू कैन नॉट डिक्रीज द लिमिट इन वन डायरेक्शन टू इंक्रीज द लिमिट इन अदर डायरेक्शन, right? So this is the disha pariman vrat. फिर 7th व्रत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है भोगा भोग परिमाण व्रत। सो इन वंदी 2 देर आर 4 गाथास जस्ट रिलेटेड टू दिस व्रत। तो भोगा भोग परिमाण व्रत, तो व्हाट इज भोगा भोग परिमाण व्रत? तो उसमें वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज भोग एंड व्हाट इज उपभोग। तो भोग मतलब any item that can be used for your enjoyment just once, like all the food items are bhog items. और फिर उपभोग मतलब all the items that can be used more than once. तो तुम्हारा घर है, vehicles है, animals है, all those items are उपभोग items. तो in this व्रत you put the limits on भोग items and उपभोग items. तो
तो हमने जो बात किया था 14 नियम ऑफ श्रावक, सचित दब्ब विगय वाहन तंबल वत्त कुसुमेशु वाहन वो हमने बात किया था, दैट 14 नियम्स ऑफ श्रावक फॉल्स अंडर दिस व्रत। तो वो डेली व्रत तो लेना ही है, जो 14 नियम ऑफ श्रावक तो लेना ही है, क्योंकि अतिचार में भोगाभोग परिमाण व्रत में वो उसका डिस्क्रिप्शन आता है और उसमें लिखा है कि दिनगत रात्रिगत 14 नियम लिधा नहीं, राइट। तो नॉट टेकिंग द 14 नियम डेली इज अ दोष। तो 14 नियम डेली तो दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि वो तो लेना ही है ये व्रत में। फिर उसके ऊपर देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो पहला है सचित परिबद्ध है, तो दैट इज सचित आइटम्स। तो ये व्रत में क्या है कि देर आर 4 सचित आइटम्स, राइट। यू नो द 4 टाइप्स ऑफ सचित आइटम्स, दैट इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, unboiled water and uncooked मीठू, right, salt. So there are 4 sachit items. So in this व्रत इंडिया में तो क्या लोग करते हैं कि they take this व्रत for कि they will not consume more than 1 or 2 sachit items on पंच तिथि, right, पांचम आठम चौदस। या फिर लोग ऐसा व्रत लेते हैं, they will not use more than 1 or 2 sachit items in चातुर्मास। अभी हमारा चातुर्मास अभी चल रहा है, वो कार्तिकी पूनम तक चलेगा, तो वी आर स्टिल इन चातुर्मास। तो इंडिया में लोग ऐसा व्रत लेते हैं कि चातुर्मास में दे पुट द लिमिट ऑन नंबर ऑफ सचित आइटम्स, और पांचम आठम चौदस में दे पुट लिमिट ऑन सचित आइटम्स। सो दैट इज द वे यू कैन टेक दिस व्रत। तो पहला है सचित। फिर दूसरा है तुच्छो सही भखनाया, मतलब 22 टाइप्स ऑफ अभक्ष्य। तो 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य में तो यू हैव टू कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल द 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य। तो व्हाट आर 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य? तो उसमें पहला अभक्ष्य है रात्रि भोजन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभक्ष्य इज कॉल्ड रात्रि भोजन। रात्रि भोजन इज कंसिडर्ड एज महापाप इन अवर शास्त्र, क्योंकि हमने बोला कि इट्स नॉट द जस्ट हिंसा ऑफ स्थावर जीव्स, इट्स हिंसा ऑल्सो ऑफ त्रस्त जीव्स, और इट्स अ नरक का द्वार। शास्त्र में लिखा है कि नरक का द्वार है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट रात्रि भोजन। फिर उसके बाद 4 महाविगईस, तो मीट, लिकर, हनी और बटर। अभी मीट, लिकर, हनी तो हम इतना यूज नहीं करते, पर बटर हम यूज करते हैं, हम लोग केक्स खाते हैं, तो हमारा वो प्रॉब्लम है, वी हैव टू स्टॉप यूजिंग बटर। फिर उसके बाद है 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ पीपल बनियान ग्रुप ऑफ ट्रीज। ये तो हम यूज नहीं करते, पर देर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम दिस ट्रीज। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है आइस, स्नो, तो उसमें आइसक्रीम आ जाता है। फिर उसके बाद ओपियम, ड्रग्स, एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्ले, मतलब मिट्टी। तो ऑल दिस आर कंसिडर्ड अभक्ष्य। सो आइसक्रीम इज ऑल्सो कंसिडर्ड अभक्ष्य। फिर उसके बाद fruits and vegetables, the bahubij, right, that has too many seeds. So generally it includes brinjal, includes anjeer, right? Those are the things that falls under bahubij, that are abhaksha. Next is useless fruits. Useless fruits matlab tuchh fad. There is very less things to eat, and like the seed itself is so big, right, like jambu or bor. Those are considered as tuchh fad. Unknown fruits, that is understandable. Then raw pickles that are not properly exposed to the sunlight, that is abhaksha. Then the most important is vasi, right? US में हम सब लोग वासी खाते हैं, तो we have to stop eating vasi food. The general rule is whatever you cook today, do not store it overnight and use it next day. तो रोटली, दाल, भात, साग आज का बनाया आज ही यूज कर दो। अगर नहीं यूज कर पा रहे हो फॉर एनी रीजन, देन थ्रो इट। तो इसमें वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन इज कर्यु कराव्यु अनुमोद्यु। सो समटाइम्स यू डू नॉट कंज्यूम योरसेल्फ, बट देन यू थिंक कि नहीं ये तो वेस्ट होने वाला है, मैं कल मेरे फ्रेंड को दे देता हूं, तो वो तो और पाप हुआ, क्योंकि कर्यु करता कराव्यु इज मोर पाप एंड कराव्यु करता अनुमोद्यु इज मोर पाप। So if you are not using, do not give to your friends next day. You can give to your friends the same day and tell him to use the same day, but do not give the food next day, क्योंकि उसमें तो उससे भी ज्यादा पाप है। तो तुमने नहीं यूज किया, उससे भी ज्यादा उसमें पाप है। So that thing I wanted to mention कि it's better to discard. उसमें गटर में डाल दो, बेटर तो उतना ही बनाओ जितना यूज कर पाओ और कंप्लीटली फिनिश कर दो खाने का। पर अगर कोई रीजन से नहीं कर पाओ, then discard it. फिर उसके बाद है
The preparations made by curds, अभी buttermilk if you use then the उसका time increase हो जाता है, it's 48 hours. So preparations made out of buttermilk more than 2 nights ago, so that becomes vasi. Then sweets, in cold season the time is 1 month, in summer it's 20 days, and in Chaturmas it's 15 days. After that you have to discard. Using vegetables in Chaturmas, currently we might be using vegetables, and using dry fruits in Chaturmas, and eating mangoes after Adra Nakshatra. So these are all called Vasi or Abhaksha. And 21st is Dvidar. Dvidar is mixing of cold curd with the pulses. And उसमें ना विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं. There is a special category of जीव in जीव which are called विकलेंद्रिय जीव्स. So विकलेंद्रिय जीव्स ऐसे हैं कि they can move. They are able to move. They are neither thrust जीव्स nor स्थावर जीव्स, and they are called विकलेंद्रिय जीव्स. तो उसमें महापाप है द्विदर में. So make sure कि द्विदर नहीं होता है. And the last is 32 Anandkais. So उसमें all the roots, potatoes, garlic, onion, वो सब. So these are the 22 abhaksha that you should completely eliminate from your life. चेतन भाई, हाँ. एक क्वेश्चन पूछना था. कर्ड्स मिक्स्ड विद पल्स, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, जैसे कुछ चीज दाल वगैरह कुछ खा ली और उसके थोड़ी देर भी नहीं, लाइक उसके ऊपर पानी पिया और उसके ऊपर फिर दही खाते हैं. सो इज दैट ओके और दैट इज आल्सो नॉट ओके? नहीं, दैट्स ओके. मतलब ना बोलते हैं कि मुंह में मिक्स नहीं होना चाहिए. ओके. या पेट में मिक्स हो, ओके, क्योंकि एसिड जनरेट होता है पेट में. तो पेट में एसिड जनरेट होता है तो वो फिर उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है. तो पर मुंह में मिक्स नहीं होना चाहिए. So I ate pulse. अभी मैंने दाल की सब्जी खाई है और मैंने सिर्फ उस पे लेट्स से 2 या 3 घूंट पानी पिया और उसके बाद मैं कर्ड खा सकती हूँ. ओके, हाँ, ओके. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. ચૈતલ એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો, લાઈક જે દહીં બનાવવાની જે પ્રોસેસ ઇટસેલ્ફ છે, ઇઝ ધેટ એ પ્રોસેસમાં હિંસા ઇન્વોલ્વ છે? લાઈક કારણ કે જે દહીં માટે જે જૂનું દહીં આપણે દૂધમાં નાખીએ, રાઈટ? સો ધેટ પ્રોસેસ. યા એ છે ને પ્રોસેસ એમાં એવી છે કે 48 અવર્સ સુધી ચાલે. એટલે આફ્ટર 48 અવર્સ ના ચાલે. ધેટ ઇઝ ધ કાર્ડ ફોર દહીં. એટલે જો મેળવણ ઇફ યુ મિક્સ ધ દહીં should not be more than 48 hours old. So every 2 days you have to make a new curd, અને પછી જે જૂનું curd you have to discard after 2 days. So એનો કાર્ડ is 48 hours દહીંનો. Chetan, આપણે દહીં કેમ ખવાય actually, because we are in a kind of fermented કરીએ છે, right? So how come it's allowed to eat actually? So that is a very good question. અને આમાં શું છે કે there is a scientific reason. હવે છે ને જે દહીંમાં there is a bacteria called lactobacillus, right? તો હવે જે lactobacillus bacteria છે ને, that is also in our stomach. And science has proved this. એટલે મતલબ there are lots of Google search માં તમે કરી શકો છો. પણ if you can read कि ये दही તમે ખાઓ તો that bacteria does not die in the stomach. જે lactobacillus જે દહીંના બેક્ટેરિયા છે, it does not die in the stomach, કારણ કે સ્ટમકમાં પોતે જે બેક્ટેરિયા હોય છે. તમે પ્રોબાયોટિક્સ લો, probiotics is in the lining of the stomach. તો मतलब this is the beauty of our જૈન ધર્મ. मतलब તમે સમજો કે ભગવાને આ જોયું છે, અને ભગવાને જોયું છે કે એમાં જીવ હિંસા નથી. કારણ કે આ જે બેક્ટેરિયા છે, જે પણ not just lactobacillus, there are lots of other bacteria, and this all bacteria acts as a probiotics, and they are already present in the lining of stomach, and they are not killed in the stomach acid. And they go directly out of the body through stool. એટલે અમુક બેક્ટેરિયા તમે stool તમે આપો તો they can actually count the live bacteria. They does not die in the stomach. So this is the beauty. So that is very good question. તો એટલે છે ને આપણા પહેલા જમાનામાં લોકો જે આહાર લેતા હતા ને એને ઓદન કહેવાતું હતું. અને ઓદન શું હતું? રાઈસ અને કર્ડ. that's what was ઓદન. અને પહેલા જમાના લોકો ઓદન ખાતા હતા. ભગવાન મહાવીરના સમયમાં આપણે ઘણા ચરિત્રોમાં આવે છે કે એમને ઓદન ગ્રહણ કર્યું. ઓદન એટલે રાઈસ અને કર્ડ.
એટલે પહેલા જમાનામાં લોકો ખડ ખાતા હતા. એટલે એટલે ભગવાને હેવ સીન ઓલ ધીસ, અને ભગવાને જો આટલા સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવ સુધી વર્ણન કર્યું હોય તો એમને તો ખબર જ હશે, એમને તો કેવળ જ્ઞાનમાં જોયું જ હશે ને બેક્ટેરિયાનું તો. Right. Yeah, but this is मतलब I think this is the scientific reason. मतलब मैं આમાં ઘણું રિસર્ચ કર્યું છે, અને this is what I was able to find કે this bacteria are does not killed in the stomach. અને હા, તમારો વોઇસ જતો રહ્યો. જઈએ ને તો ત્યાં ઉપર ઘડ ઉપર અમુક પુઅર પીપલ દે આર સેલિંગ કર્ડ પોટ્સમાં, ઇફ યુ રિમેમ્બર. Can you repeat again? આપણે પાલીતાણા જઈએ ને તો હા. પાલીતાણા એક વખત આપણે ઘડ ચડીએ ને પછી ત્યાં ઉપર લોકો એ રીતે દહીં વેચતા હોય છે માટલામાં, તો એ આપણે ના ખાવાનું હોય એમ કે, યુ નો. કારણ કે એ છે ને એનું રીઝન પવિત્ર ક્ષેત્ર છે ને, તો આપણે પવિત્ર ક્ષેત્રને દૂષિત કરીએ છીએ. તમે તો આપણે તો પાલીતાણા ચડીએ તો આપણે તો ચંપલ પણ નહીં પહેરવાના હોતા. આપણે મતલબ ખાવાનું તો બહુ દૂરની વાત છે, રાઈટ? કારણ કે ખાવાનું તો અપવિત્ર વસ્તુ છે. તમે તીર્થ, કારણ કે એ છે ને આખો ડુંગર પવિત્ર છે. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ દેરાસર. This Palitana, Girnar, Summit Shikhar, even Astapad, this all four mountains, they itself are pavitra, right? मतलब not just the તીર્થ, કારણ કે એમાં તો એક કાંકરે અનંત સિદ્ધો થયા છે, અને પાલિતાણા and Girnar, they are the શાશ્વત તીર્થ. So that mountain itself is શાશ્વત. So that's why you said you do not consume any food while you are climbing. Chaital, Ankita બોલું છું. I just had a quick question about fermented foods, right? એટલે આપણે હવે ઢોસાનું ખીરું બનાવવું હોય તો I understand કે આપણે જો ઓવરનાઇટ રાખીએ તો એ વાસી થઈ ગયું, તો એ તો ન જ ખવાય. પણ ધારો કે વહેલી સવારે કરેલું હોય ને સાંજે ખાવું હોય તો that should be okay. But I was wondering કે સાધુ મહારાજને fermented ચાલે? Is there any Jainism behind આથેલું ખવાય કે ના ખવાય? હા, ખવાય. એટલે તમે એક્ઝેક્ટ કીધું એ જ વાત છે કે તમે સવારે ઉઠીને તમે ઢોસા બનાવો તો સાંજ સુધી ચાલે. ઇવન સાધુ મહારાજને પણ એ સેમ રૂલ. અને પછી એના પછી એ વાસી થઈ જાય, એટલે એમાં જીવ ઉત્પન્ન થવાનું શરૂ થઈ જાય. એટલે ફર્મેન્ટેડ જે કાર્ડ છે એ ખાલી દિવસ પૂરતો જ છે. એટલે આફ્ટર દેટ યુ હેવ ટુ ડિસ્કાર્ડ. એન્ડ સેમ થિંગ્સ એપ્લાય ફોર સાધુ મહારાજ. એટલે ઢોસા યુ ડોન્ટ મેક ઓવરનાઇટ. હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી ઢોસામાં શું છે કે તમે ઓવરનાઇટ રાખો તો ટેસ્ટ સારો આવે છે, અને દેટ્સ વોટ ઇટ પ્રૂવ્સ, રાઈટ? કે એમાં જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે. આમાં છે ને કેટલી વાર ટેસ્ટ સારો આવતો હોય ને, દેટ પ્રૂવ્સ કે એમાં જીવ છે. એટલે છે ને જેવી રીતે there was an experiment especially with this દ્વિદળ. દ્વિદળમાં લોકો દ્વિદળ ક્રિએટ કરે. અમુક ગામડામાં લોકોને ધર્મ ખબર ના હોય તો ગામડાના લોકો શું કરે કે દે મિક્સ ધ પલ્સીસ વિથ દહીં અને ગીવ ટુ આ જે હેન્સ છે ને ચિકન, દે ગીવ ટુ ચિકન એન્ડ હેન્સ મરઘીઓને ખાવા માટે આપે. તો દે ફાઉન્ડ આઉટ કે when they give curd and pulses separately, they don't eat. But when they mix together, that chicken started eating with very એકદમ fast. કારણ કે એમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. બેઝિકલી દે આર ઇટિંગ જીવ્સ. એટલે દેટ ઇઝ ધ થિંગ કે એનું આખું તમે મિક્સ કરો તો તરત જ વીકલી અંદર જીવ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. અને દેટ્સ વોટ આ તિરિયન જીવોને they find that tasty. એટલે ઇવન ફર્મેન્ટેડ ફૂડ if you see, right, મતલબ if you do it overnight તો એનો ટેસ્ટ બદલાઈ જતો હોય છે. You will find it is more tasty for some reason. પણ આપણા ધર્મમાં કીધું છે કે if you want to make dosa, make it in the morning and કાર સનસેટ પહેલા પછી ડિસ્કાર્ડ કરી દો. ચૈતલ, વિકલેન્દ્રિય અને ત્રસ્ત જીવોમાં શું ડિફરન્સ કીધો? તો ત્રસ્ત જીવો શું હોય છે? ત્રસ્ત જીવો આર ફ્રોમ બેઇન્દ્રિય to પંચેન્દ્રિય. હવે આ વિકલેન્દ્રિય ઇઝ અ સ્પેશિયલ કેટેગરી ઓફ જીવ દેટ આર સ્ટીલ એકેન્દ્રિય, but they are able to move. હવે શું છે કે મતલબ જે સ્થાવર જીવ્સ આર ઓલ એકેન્દ્રિય જીવ્સ, રાઈટ? એન્ડ અપકાય, વાવકાય, તેવકાય, વનસ્પતિકાય, they are all are સ્થાવર જીવ્સ and they are all એકેન્દ્રિય જીવ્સ. But a વિકલેન્દ્રિય is a category that falls between એકેન્દ્રિય and બેઇન્દ્રિય. એટલે એમાં છે ને બે ઇન્દ્રિયની ક્ષમતા એટલે
એ હોય છે, પર્યાપ્તિ થતી નથી, પણ એની લબ્ધિ હોય છે એ લોકોને, અને એ લોકો હલન ચલન પણ કરી શકે છે. એટલે they are more like trustજીવ્સ, they behave like trustજીવ્સ, but they are એકેન્દ્રિય છે પણ ત્રસ જીવો જેવું એમની જે હલનચલન કરી શકે છે. એક્ઝેક્ટલી, એટલે એમ લોકોને સ્પેશિયલ કેટેગરી આપી છે કોલ વિકલેન્દ્રિય જીવ્સ શાસ્ત્રમાં. ઓકે. આપણે ત્યાં એકવાર જીવ વિચાર લઈશું, અને આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જીવ વિચારનો, so we can cover all this. Chetal, I'm asking, I actually forgot it, that's why I'm asking again. Ekendriya jeev ma પણ એટલે ekendriya jeev can move, right? In general they can also move, like amoeba, whatever, they are ekendriya, but they can move, right? So ekendriya પણ ત્રસ અને સાવર બે હોય, right? ના, એટલે છે ને, મતલબ that is very very good question. તો આપણા શાસ્ત્રમાં, if you go into further details, there is a term in કર્મ ગ્રંથ called ગતિત્રસ. તો ગતિત્રસ નામનો શબ્દ આવે છે. એ શું હોય છે કે જે સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ અમીબા છે, કે પછી ઇવન લાઈક વિન્ડ, રાઈટ, વિન્ડ ઇઝ એબલ ટુ મૂવ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર. તો એમાં શું છે કે they are able to move from one place to another, but they are moving without their સંજ્ઞા, without their knowledge and without their ઈચ્છા. એ પોતાની ઈચ્છા વગર મૂવ થાય છે. તો even though they are able to move, but they are able to move without their ઈચ્છા, and that's why they have got a special term in કર્મ ગ્રંથ called ગતિત્રસ. તો અમીબા છે, વાયુકાય છે, ઇવન અગ્નિકાય છે, એ લોકોએ એમાં ગતિત્રસની ઉપમા આપી છે. ઇવન ધો દે આર સ્થાવર, in one sense they are સ્થાવર, in other sense they are trush, but they are called gatitras. Okay, got it. Okay, so we were still discussing the Bhoga Bhog Pariman Vrat. So we discussed about the Sachit, Dravya ka Tyag. Then we also discussed the 22 Abhaksh ka Tyag. Then another thing that falls under Bhoga Bhog Pariman Vrat is 15 Karmadans, right? If you remember Atichar Sutra, આપણે બોલીએ છીએ, right? 15 Karmadan, 5 Samanya, all these terms we use, right? So what are these 15 Karmadans? So in 15 Karmadans, there are 5 types of jobs or occupations. Then there are 5 types of business and 5 types of activities that are prohibited. So first is 5 types of occupations. So Ingali, Vansadi, Bhadi, Fodisu, Vajjay, Kammam. So Ingali means anything to do with fire, right? For right now, forging industry or coal industry, right? Power plants. So you should not work there. Then second is Varn. Varn matlab forestry. Anything to do with gardening, forestry, or farmlands, you should not work in those kind of occupations. Then third is Sadi. Sadi means vehicles, motor vehicles. You should not work at places where that produces or manufactures motor vehicles or selling motor vehicles, because it's a very big pap. Then Bhadi and Fodi. Bhadi means all the rental vehicles. It again relates to mostly renting out vehicles, giving vehicles for rent. And Fodi is a very big pap. All the construction activities. Ema Sadkai Jivni Hinsa lakhi che, matlab you kill all the types of Jews, all the 6 types of 6 Ekindriya, Behindriya, Chaurindriya, all the way to Panchindriya. So all the building of houses, roads, bridges, everything falls under this. So in our Shastra, these 5 types of occupations are prohibited for Shavaks. Then second is 5 types of business. So Vanijyam, Chevadantam, Lakkarasa, Kesa, Visa, Visayam. So first is Vanijya, Chevadantam. Dantam matlab teeth, right? Like ivory. It's called Dantam. So dealing with any type of animal parts, it might be teeth or feathers or hair or anything, it's prohibited. Second is dealing with liquid substances like coal or wax or resin or fuel. It's prohibited. So having gas stations, you should not, our Shavak should not be in gas stations. Then third is selling any edible liquid substances like oil, ghee, it's all prohibited, honey. Then dealing with animals like dairy industry, you should not own a business like a dairy industry.
and then all the acids, drugs, poisons, and weapons, like weapons of mass destructions. So these are the 5 types of business that are prohibited in our Shastra. So you must be wondering, it's very, very difficult to follow nowadays, but this is what is given in the Vanditu Sutra. So right now it might be very difficult, but if you are in one of these industries, then I will suggest talk to Sadhu Maharaj and take some alochna. He might give you some alochna. Then there is 5 type of samanya. Samanya means 5 type of activities. So first is operating heavy machineries like grinding, that is a mahapap. Then cutting organs of animals. In India, you will see like cows, they make holes in the ears, right? And they put tag. So that is prohibited. You cannot make holes in ears of animals. Then burning of forest. Davadanam means burning of forest. Saradara Talaya Sosam means drying up the lakes. Usually we don't do all those things. And last is asati poshan. You should not raise any animals or birds, and then you should not sell them for earning money. So these are the 5 types of activities that are prohibited for the Shravaks. So this completes the Bhogabhog Pariman Vrat. So Bhogabhog Pariman Vrat is a very big Vrat. There are so many things in Bhogabhog Pariman Vrat. So, in Dhirubhai Pandit's Chopdi, there are at least, I'll say, 20 pages on Bhogabhog Pariman Vrat. So try to tick mark whatever you can, and then you can take this Vrat. Then the 8th Vrat, or the 3rd Gun Vrat, is the most important of the Gun Vrats, is the Anarthadan Virman Vrat. So there are 3 gathas in Vanditu Sutra on this Vrat. So what is Anarthadand? So simple definition of Anarthadand is pramad. Right? Any pramad is called Anarthadand. So I was telling in the last session that I was talking with Maharaj Sahib, Jinpra Maharaj Sahib, and Jinpra Maharaj Sahib asked me this question. What is the biggest pap that Jains or Shravaks do? And I started thinking, I didn't have answer. I gave so many different answers. But Maharaj Sahib said, Anarthadand. That is the biggest pap. Pramad. This is the pap that we commit. So what is pramad? Pramad are 4 things. First is asubh vichar. Any vichar of artha dhyan and rautra dhyan. That is pramad. Then second is adhikaran, giving articles by which the pap will be committed. It's called adhikaran. Then third is papopdesh, that is encouraging someone to commit pap. And third is pramad itself. So these are the 4 types of pramads. So first is asubh vichar, right? Asubh vichar, just think about it, right? हमको तो पूरे दिन में asubh vichar ही आते हैं, ऐसा लगता है. So what is asubh vichar? So artha dhyan and rautra dhyan are asubh vichars. So what is artha dhyan? So any vichar that involves rak or dvesh, any vichar that involves rati or arati is called artha dhyan. So there are 3 types of artha dhyans. In Mupattika Padilayan, we say this, right? Ras Garav, Sata Garav, Vruddhi Garav, Pariharu. So that's what it means. So what is Ras Garav? Ras Garav means being happy when you get tasty food to eat and being unhappy when you get bad food to eat. Right? अगर तुम्हारे वाइफ या किसी ने अच्छा नहीं बनाया, सपोज मीठू ज्यादा आ गया, तो तुरंत थोड़ा गुस्सा शायद आ जाता होगा माइंड में. सो दैट इज ऑल अशुभ विचार, राइट? फिर उसके बाद सेकंड इज साता गारव, बीइंग हैप्पी व्हेन यू आर हेल्दी and being unhappy when you have got disease or sickness. That is called Sata Garo. And last is Vruddhi Garo, being happy when you make progress in your life, when you get promotion, when you earn more money, and being unhappy when you get failure in your life. So these all types of vichar are called Artha Dhyan. You just think हमारा पूरा जीवन में हमारा आर्त्य ध्यान कितना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पूरा, हम जब भी सामयिक या कुछ करते तभी आर्त्य ध्यान नहीं होता है, हम या फिर कुछ धर्म क्रिया करते तभी हम आर्त्य ध्यान नहीं होता है, बाकी तो हम राग या द्वेष में ही होते हैं. एंड सेकंड टाइप इज रौद्र ध्यान. रौद्र ध्यान मतलब थिंकिंग अबाउट वायलेंस, चोरी, झूठ और अब्रह्म. सो दिस ऑल is the second types of asubh vichar.
फिर second is adhikaran. Adhikaran means giving harmful articles to someone, right? So you cannot give knives, you cannot give weapons, you cannot give like lawnmower to your friends. तो जिससे भी पाप कमिट होता है, do not give to your friends or anyone, you know. तो वो अधिकरण बोलते हैं. और सेकंड इज पापोपदेश. पापोपदेश मीन्स एनकरेजिंग अदर्स टू कमिट पाप. किसी को चोरी करने के लिए बोलने का, किसी को झूठ बोलने के लिए बोलने का, किसी को अब्रह्म सेवन को बोलने का, वो सब. सो दैट इज कॉल्ड पापोपदेश. एंड द लास्ट इज प्रमाद इटसेल्फ. तो whenever you are not in शुभ विचार और शुभ क्रिया, it's called pramad. So everything you do in your life mostly falls under pramad. So watching TV is pramad. Watching sports, playing cricket, playing sports board games, taking long baths, reading magazines, reading novels, seeing internet, right? Internet is the most important thing. Doing time pass on internet. Taking bath in rivers, lakes, ponds, swimming pools. Everything is pramad. तो only time हम प्रमाद में नहीं होते हैं जब हम धर्म करते हैं और धर्म क्रिया में होते हैं, तभी प्रमाद में नहीं होते हैं. पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन प्रमाद. तो इसलिए भगवान महावीर ने गुरु गौतम स्वामी को बोला, तू एक क्षण का भी प्रमाद मत करना. दिस लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट, मनुष्य भाव, कि एज सुन एज यू गेट टाइम, इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑन द टीवी और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंटरनेट, रीड द बुक. बुक एक सामने ही रखने की, जैसे ही तुमको 15 मिनट मिले, जस्ट ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग धर्म का बुक. तो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू रिड्यूस द प्रमाद. तो दैट इज द थर्ड गुण व्रत. तो एनी क्वेश्चंस इन द गुण व्रत? ठीक है. चैतल, जो हम लेक्चर, धार्मिक लेक्चर सुनते हैं, वो सब नहीं आता, राइट? वो जो जैसे कि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, those things are fine, right? Yeah, that falls under स्वाध्याय. स्वाध्याय ने हमने पता है एक बार लिया था, स्वाध्याय और 5 types, वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा. So whenever you are listening to any lectures, that is स्वाध्याय. तो मतलब एनी धर्म क्रिया और शुभ क्रिया वो प्रमाण में नहीं आता है. मतलब इवन दो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूं, तुम सुबह उठ के नहा के तुम तैयार होके देरासर के लिए निकले, तो गाड़ी में अगर 1 घंटा लगा, दैट इज नॉट प्रमाद, बिकॉज तुम देरासर जा रहे हो, तुम शुभ क्रिया के लिए तुम क्रिया कर रहे हो. तो दैट इज नॉट प्रमाद. तो वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द शुभ क्रिया और द शुभ क्रिया इटसेल्फ, that all falls under धर्म क्रिया, और बाकी सब पूरा प्रमाद में आ जाता है. Okay, that makes sense. Okay, फिर उसके बाद है 4 शिक्षा व्रत. ये 4 शिक्षा व्रत में इतना टाइम नहीं लगेगा, इट इज pretty straightforward. तो the 9th व्रत एंड पहला शिक्षा व्रत इज सामयिक. तो हमने आवश्यक क्रिया में देखा कि you have to do 1 सामयिक every day, that is आवश्यक क्रिया. But if you are not able to do 1 सामयिक daily, it's very difficult to do 1 सामयिक daily, then in this vrat you have to take a niyam or pachkan that you will do at least certain number of samayiks. So for example, you take a niyam that I will do at least 1 samayik a week or 1 samayik a month or 1 samayik a chaturmas. Utna to I think everyone can take here. 4 महीने में 1 सामयिक तो सब लोग कर सकते हैं. तो टेक दिस व्रत. इंपॉर्टेंस इज टेकिंग दिस व्रत, बिकॉज व्हेन यू डाई, अगर तुमका आयुष्य कर्म बंद हो और तुम व्रत में हो, तो तुमको शुभ गति का आयुष्य कर्म बंद होगा. अगर तुम व्रत में हो तो, व्रत में नहीं हो तो अशुभ गति का आयुष्य बंद होगा. सो इंपॉर्टेंट इज टू रिमेन इन द व्रत. सो टेक दिस व्रत. So Chetan bhai, any kind of vrat is considered okay? Yeah, any of this, out of this 12 व्रत, कोई भी व्रत लो, या इवन इफ यू आर नॉट एबल टू टेक दिस 12 व्रत, तुम वो जो 14 नियम है ना श्रावक के, वो लो डेली. तो वो भी मतलब देश वीति के व्रत में ही आ जाता है, वो भी भोगागोग परिमाण व्रत में ही आ जाता है. तो मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी इन व्रत एंड पचकान. मतलब तुम दिन में 9 काशी का पचकान आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल कैन डू. सनराइज के बाद 48 मिनट्स के बाद पानी यूज करने का, आई थिंक एवरीवन कैन डू.
तो पूरा तुम्हारा दिन तुम्हारा पचखान में हो गया। अगर एक पचखान भी दिन में लिया तो तुम्हारा पूरा दिन पचखान में हो गया। और जब तुम्हारा आयुष्य बंद होगा, दैट मीन्स तुम्हारा पचखान के वक्त तुम्हारा आयुष्य बंद हुआ। और उसमें उसमें सदगति का आयुष्य बंद होता है जब तुम पचखान में हो। ओके। एंड वन मोर थिंग चेतन भाई, व्हेन यू आई मीन जो आपने अभी पचखान के बारे में बताया, तो लेट्स से आज सुबह नौकारसिका नहीं ले पाए, बट ड्यूरिंग द डे धारणा, अभिग्रह, पचखान, वो एक घंटे का या 2 घंटे का पचखान ले, सो इवन दैट इज ओके? या वो भी ओके ना। ओके, वो भी ओके। मतलब यू कैन डू धारणा अभिग्रह स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, राइट? अभी विंटर्स में तो हम दुविहार, तिविहार, चौविहार बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें क्या करता हूँ, मतलब व्हाट आई डू माई सेल्फ इज आई यूजुअली डू धारणा अभिग्रह और मुट्ठी सही का पचखाई। तो मैं डिसाइड कर देता हूँ कि 7 बजे के बाद रात को नहीं खाना है। ओके, क्योंकि सनसेट तो हो ही जाता है, रात्रि भोजन भी हो जाता है, पर एटलीस्ट तुमने ये पचखान लिया है कि 7 बजे के बाद नहीं खाना है। ओके, या तो एटलीस्ट उतना ले सकते हैं। अगर रात्रि भोजन का नहीं ले सकते तो एटलीस्ट यू कैन डू दिस मच। तो सामयिक का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर सेकंड इज देशावगासिक व्रत। अब ये देशावगासिक व्रत ना इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक। Chaital bhai, sorry, I was having trouble going off mute. So what Neetu was saying, can you repeat that? Because see, Jay, I can't get Jay to do it because his school starts. So before the sunrise, he has to have breakfast and everything. तो सवारनु नवकारसिनु નથી થતું. So what was that other one I didn't get? Can you explain the other one? The 2 hours, right? अदरवाइज आई वाज सेइंग रिगार्डिंग द रात्रि भोजन। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी अभी तो टाइम डिक्रीज होते जा रहा है। अभी तो आज फॉर एग्जांपल 6:50 को रात्रि भोजन का था सनसेट। तो अभी तो सिंपल है, पर आई थिंक जब टाइम चेंज होगा और 5:30 को या 5:15 को सनसेट होने लगेगा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द दुविहार या तिविहार का पचखान या चौविहार का पचखान। तब क्या करने का, धारणा अभिग्रह का मुट्ठी सेव का पचखान ले लेने का। तो उसमें यू हैव टू डिसाइड इन योर माइंड कि आज मैं रात को 7 o'clock के बाद या 8 o'clock के बाद मैं नहीं खाऊंगी। या तो वो भी पचखान हुआ और उसका भी बहुत बड़ा फल होता है। उसमें फिर रात्रि भोजन का इतना पाप नहीं लगता है। उसमें या थोड़ा पाप बहुत कम हो जाता है। जो रात्रि भोजन का जो पाप लगने वाला था जो पचखान के बिना, अभी तुम मुट्ठी सेम के पचखान में हो तो तुम्हारा रात्रि भोजन का पाक एकदम बिंदु जैसा हो गया। Yeah. So, Chaital bhai, so I don't know. I think this is a silly question, but Jay is going to ask, and my kids might ask too in Pachala, so that's why I want to know. So, like, ave pachkan to apne ratri bhojan lo lidu, right? And that pachkan I took, I mean, I guess maybe. Like, if I took in the morning every day and said, okay, tonight at 7 o'clock I'll stop eating, and then you don't eat the whole night, then you are in pachkan from the morning, from the time that you took pachkan, technically you are in pachkan, right? Okay. Yeah, you are in pachkan, definitely. मतलब तुम सुबह से भी ले सकते हो, सुबह से भी। You know, मतलब पचखान तो कोई भी टाइप का ले सकते हो। अभी अपने शास्त्र में तो एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे तुमको पालिताना में जो कपटी यक्ष है ना, कपटी यक्ष, तो उसका तो पूरा स्टोरी आता है पूरा भव का, कि उसका तो पूरा जीवन ये सब मांस सब कुछ खाता था। ये जो he was like doing everything। पर उसको फिर ना गुरु महाराज मिले और गुरु महाराज ने उसको एक पचखान दिया। और पचखान भी कैसा पचखान, तो उन्होंने गुरु महाराज ने ऐसा पचखान दिया कि ये जो सिल्क का थ्रेड है, सिल्क का रुमाल, उसको तुमको गांठ बांधने का, और तुम जब भी तुम खाओ ये गांठ ओपन करके खाने का। और उसने तो उस समय सब कुछ मांसाहार वो सब का तो पचखान ले लिया गुरु महाराज साहब को मिलने के बाद, पर उसने फिर ये पचखान लिया कि whenever he eats he has to वो गांठ निकालने का सिल्क के रुमाल से, फिर उसके बाद खाने का। तो उससे क्या हुआ देखो तुम, कि जब वो यंग आदमी था, फिर धीरे 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 वो एवरीडे वो ये फॉलो करता था, जब भी खाए गांठ को रिमूव करेगा और फिर जब खाना फिनिश हो वापस गांठ बांध देगा, राइट? तो चलता गया। फिर उसकी उम्र हो गई, फिर उसके बाद उसके शरीर में वो शक्ति नहीं रही,
उसको आंख से अभी दिखने का कम हो गया, तो उसने गांठ तो बांधा, पर भी सिल्क का थ्रेड है, राइट, और उसमें गांठ तो बहुत छोटा हो जाता है, तो वो गांठ वो निकल नहीं पाया। तो फिर उसने महाराज साहब का वचन को याद किया, और उन्होंने सोचा कि महाराज साहब ने कोई रीजन से मेरे को ये पचकान दिया है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को ये गांठ निकल नहीं रही है, और उसका मतलब है कि मेरे को अभी खाने की जरूरत नहीं है। तो उसने वहां का वह अनशन ले लिया, और वो अनशन लेके वो मृत्यु हुआ, तो वो दूसरे भ में यक्ष बना। और यक्ष भी कैसा यक्ष, कि पालिताना तीर्थ की रक्षा करने वाला यक्ष, कपटी यक्ष। Yeah, तो yeah. तो कहने का मतलब कोई भी पचकान, ऐसा भी पचकान लोग लेते हैं, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ पचकान, पर पचकान का ये महत्व है कि अंत समय में ये सब चीज याद आ जाता है ऑटोमेटिक, पूरे जीवन में किया है तो यही चीज याद आता है। Okay. And 2/3 નું જે rule છે, it's saying that 2/3 of your lifespan is when your next gati is determined, right? Yeah. What is determined at that? એટલે જે 2/3 નું જે રૂલ છે ને, એમાં એવો રૂલ છે કે તમારો જેટલો લાઈફ હોય, જનરલી આયુષ્ય કર્મનો બંધ 2/3 જ્યારે આયુષ્ય બાકી હોય ત્યારે થાય. ઓકે, સપોઝ એ વખતે ના થાય આયુષ્ય કર્મનો બંધ, દેન જ્યારે 1/3 બાકી હોય ત્યારે થાય, અને જ્યારે એ વખતે પણ ના થાય તો અંત સમયે થાય. એટલે અને પાછું શું છે કે આયુષ્ય કર્મનો બંધ મોટે ભાગે 90 એટલે આયુષ્ય કર્મનો જ બંધ થાય, not gati. Just what your lifespan is going to be. Okay. નહીં, આયુષ્ય કર્મ એટલે બીજા ભાવનું આયુષ્ય કર્મ. હા, બીજા ભાઈનું પણ નોટ, તમારી ગતિ નથી ડિટર્મિન થતી, જસ્ટ આયુષ્ય તમારું ડિટર્મિન થાય છે. નહીં, બંને. ઓકે, બંને, એટલે આયુષ્ય કર્મમાં એટલે બંને આવી જાય, એટલે તમારે બંને આવી જાય, એટલે નોટ ઓનલી જસ્ટ ટાઈમ સ્પાન, પણ તમે કઈ ગતિમાં જવાના છો એ પણ આવી જાય. એટલે છે ને, અને એવું લખ્યું છે શાસ્ત્રમાં कि 99% ऑफ टाइम તમારો આયુષ્ય કર્મનો બંધ પાંચમ, આઠમ કે ચૌદસે થાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ અ રીઝન વી ડુ પાંચમ, આઠમ એન્ડ ચૌદસ. કે અને એમાં પણ શું છે, પાંચમ કરતા આઠમે વધારે થાય અને આઠમ કરતા ચૌદસે વધારે થાય. That is a probability. That's why ચૌદસ is more important than આઠમ and આઠમ is more important than પાંચમ. Okay, got it. तो પછી सेकंड शिक्षा व्रत देशावकाशिक व्रत. देशावकाशिक व्रत ना वेरी इंटरेस्टिंग व्रत. तो उसमें ना देर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट यू पुट द लिमिट टू द प्लेस, कि इंडिया में क्या करते हैं, दे पुट लिमिट एज अ हाउस और लिमिट एज अ रूम. और फिर उसके बाद यू हैव टू डू मिनिमम एकाशना. तो यू कैन डू एकाशना, आम्बेल और उपवास. एंड द लास्ट थिंग इज यू हैव टू डू 10 थिंग्स. यू हैव टू डू राई प्रतिक्रमण, you have to do 8 सामयिक्स, and then you have to do evening प्रतिक्रमण. So that is देशावकाशिक व्रत. तो देशावकाशिक व्रत में क्या होता है कि when you put limit to a place, you completely cut off all the affairs beyond that place. तो फॉर एग्जाम्पल अगर घर का तुमने व्रत लिया, तो you cannot deal with anything outside the house. You cannot talk to anyone outside the house. You cannot send anything to outside the house. You cannot receive anything from outside the house. So this all falls under देशावकाशिक व्रत. तो उसमें you have to spend your whole day in शुभ क्रिया और धर्म क्रिया. So you cannot watch TV, you cannot do all those things. तुम्हारा पूरा दिन धर्म क्रिया में जाना चाहिए. और and that is देशावकाशिक व्रत. और मतलब ये व्रत में you have to take a नियम कि you will do at least one देशावकाशिक व्रत a year. Like संवत्सरी तो संवत्सरी में at least एक बार ये व्रत करना चाहिए. फिर द थर्ड इज पौषद. पौषद तो यूएस में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पर पौषद के बारे में लिखा है कि वन हैज टू डू पौषद ड्यूरिंग द पर्व तिथि. राइट, इन अतिचार में आता है कि पर्व तिथि है, पौषद लीधो नहीं. सो इफ यू डू नॉट डू पौषद ड्यूरिंग पर्व तिथि, इट इज कंसिडर्ड अतिचार, इट्स कंसिडर्ड दोष. तो पर्यूषण के वक्त यू हैव टू डू पौषद. तो पर्यूषण के 8 दिन में एक पौषद तो होना ही चाहिए. तो पौषद मीन्स लिविंग अ लाइफ लाइक अ साधु भगवंत. मिनिमम यू हैव टू डू एकाशना, and then you have to follow 5 समितिस and 3 गुप्तिस like साधु महाराज साहब. तो that is the पौषद व्रत. यूएस में तो हम लोग ये व्रत ले नहीं पाएंगे.
और फिर लास्ट है अतिथि समविभाग व्रत. तो अतिथि समविभाग व्रत इज सिंपल, मतलब यहाँ पे इन यूएस वी कैन डू दिस व्रत. तो उसमें ऐसा है कि इट्स आइदर गिविंग गोचरी टू साधु महाराज साहब और गिविंग फूड और गिफ्ट्स टू साधर्मिक. तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस डे यू डू सम तप, यू डू एकाशना या कुछ, फिर दूसरे दिन यू कॉल साधु महाराज फॉर गोचरी, और साधु महाराज के बाद गोचरी को देने के बाद यू डू पारना. अगर साधु महाराज नहीं हो देन यू कॉल योर साधर्मिक, और साधर्मिक को भोजन दे के उसको खिला के उसने खा लेने के बाद तुमको पारना करने का. सो दैट इज कॉल्ड अतिथि समविभाग व्रत. तो इंडिया में तो ये लोग बहुत करते हैं. इंडिया में दिस इज वेरी सिंपल व्रत कि तुम एकाशना करो, दूसरे दिन किसी को अपने साधर्मिक को बुलाओ घर पे खाने के लिए, और उसके खाने के बाद तुम पारना करो. तो दिस इज अ वेरी सिंपल व्रत टू डू, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें अतिथि का बहुमान होता है, राइट. साधर्मिक का बहुमान होता है, गुरु महाराज का बहुमान होता है, वो संस्कार बहुत अच्छे पड़ते हैं इसमें. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्रत. तो दिस आर द 12 व्रत्स. या तो आई थिंक ये that completes this session. या तो कोई भी, या if you have questions, yeah, you can ask. कोई भी questions? ચૈતલ એક મીઠાનો ક્વેશ્ચન હતો. હા એટલે તમે ઓલું કાચું મીઠું કીધું ને કે સચિતમાં આવે, તો why just કાચું મીઠું? Why, what is so special about? કારણ કે કાચું મીઠું ના એમાં પાણીનો ભાગ આવે, એટલે જેવી રીતે મતલબ જે રીતે તમે ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ બી સચિતમાં આવે. તો કેમ સચિતમાં આવે? કારણ કે એમાં પાણીનો ભાગ છે, એટલે there is a water content in that thing. એટલે મીઠુંમાં પણ there is water content. એટલે જ્યાં સુધી તમે શેકો નહીં, એને ગેસ પર તમે એને શેકો નહીં, એ તેમાં કાચું પાણી હોય છે, અને કાચું પાણી itself is સચિત, રાઈટ. તો એટલે કાચું મીઠું પણ સચિત થઈ જાય છે. એટલે એને એકવાર રોસ્ટ કરવું પડે, એટલે પાણી બોઇલ થઈ જાય, એટલે પાણી જતું રહે, પછી એ અચિત થઈ જાય. So, Chetan, I always wondered about this. I don't have a good answer. કોઈ વસ્તુ સચિત હોય તો આપણે ખાઈએ ને આપણે એને હીટ કરી દઈએ તો it is still dying. The organisms in it, we are still killing them, તો એમાં તો કેવી રીતે, how come we just don't eat it at all instead of cooking it first? Yeah, તો છે ને, મતલબ this is the same logic for the water itself, right? વોટરને આપણે કેમ બોઇલ કરીએ છીએ? તો આપણે છે ને ધર્મમાં લાભાલાભનો ધર્મ કીધો છે, એટલે આઈ આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન ઇન ધ લાસ્ટ સેશન. પણ આપણે ધર્મમાં શું કીધું છે કે વી હેવ ટુ ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટ કે આપણે લાભ શેમાં છે, નુકસાન શેમાં છે. તો હવે આપણે જ્યારે કાચું પાણી પીએ છીએ તો કાચા પાણીમાં શું થાય છે કે જીવ આર કન્ટિન્યુઅસલી એમાં જન્મ થાય છે, મરણ થાય છે, જન્મ થાય છે, મરણ થાય છે. એવરી શ્વાસોશ્વાસમાં 17.5 વાર જન્મે છે અને મરે છે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ધ તો એમાં તમે જે પાણી જે યુઝ કરો છો, તો એમાં એનો કાર મેક્સિમમ તમે અગર બોઇલ કરો તો એ એક વાર મરે છે, પણ નેક્સ્ટ 9 અવર્સ સુધી એનો જન્મ મરણ બંધ થઈ જાય છે, 9 અવર્સ સુધી. સો ધેટ્સ વોટ યુ આર સ્ટોપિંગ. તો એમાં એક વાર તો તમે માર્યા, એટલે એ તો છે જ. હવે એનું તો કોઈ ઉપાય નથી, આપણે પાણી તો જરૂર છે જ, એટલે એક વાર તો બોઇલ કરવું જ પડે. પણ પછી એટલે એક વાર તો નુકસાન થઈ ગયું આપણને, પણ પછી 9 કલાક સુધી નુકસાન નથી. એટલે 9 કલાક એ અચિત થઈ ગયું. પણ આપણે બોઇલ ના કરો તો તમને કન્ટિન્યુઅસ એ જન્મે મરે એનું પાપ તમને લાગે કન્ટિન્યુઅસ. Got it. Okay. એ સેમ થિંગ ફોર વેજીટેબલ્સ. એટલે વેજીટેબલ્સ પણ આપણે તો શાસ્ત્રમાં સેલડ્સ ખાવાની પણ ના પાડી છે. યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ કુક ધ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ઈટ. એટલે આપણે તો જૈન સોસાયટી ઓફ હ્યુસ્ટન કે બધે આપણે સેલડ્સ તો બધે આપીએ છીએ, પણ શાસ્ત્રમાં ઇટ સેઝ ક્લિયરલી યુ કેનોટ ઈટ રો વેજીટેબલ્સ. એટલે આપણે સાધુ માણસને તમે રો વેજીટેબલ આપશો તો ના પાડશે. તમે કુક કરીને જ એ લોકો એક્સેપ્ટ કરશે, કારણ કે એ લોકો સચિતનો ત્યાગ હોય છે સાધુ મહારાજને. સાધુ મહારાજ કેન ઓનલી યુઝ અચિત. એટલે એ લોકો તમે વેજીટેબલ્સને તમે કુક કરો તો અચિત થઈ જાય, પાણી નીકળી જાય એમાંથી.
એટલે what about like આપણે fruits કે એમ તેમ કઈ વોરાવીએ તો Yeah, એ fruit. ચાલે? Yeah, fruitsમાં શું કોન્સેપ્ટ છે? You have to cut the fruits and keep it for 48 minutes. અને 48 મિનિટ્સ પછી એમાંથી જીવ નીકળી જાય છે અને પછી અચિત થઈ જાય છે ફ્રૂટ્સ. Okay, got it. Okay. એટલે this all we can also follow in our daily life. આપણે કોઈ ફ્રૂટ ખાવું હોય, just cut the fruits, keep it for 48 minutes અને પછી ખાઓ. તો તમે મતલબ ઘણું પાપથી બચી જશો. મતલબ સેલડ્સ પણ, you know, why to eat salads instead of cook? કોઈ શાક બનાવીને ખાઓ. ચૈતલભાઈ, એકાશનાની અંદર આપણે સ્ટ્રોબેરીના દ્રાક્ષ ખવાય ખરી? મને ખ્યાલ નથી. હા, હું પૂછી લઈશ. હું લખી દઉં છું. Yeah, is strawberry is it considered bow beach? I wondered because it does have the seeds on it. એ મને ખ્યાલ નથી. આમ તો બહુ બીચમાં શાસ્ત્રમાં તો હવે આપણે ઇન્ડિયામાં તો સ્ટ્રોબેરી બહુ મળતી નથી એ જમાનામાં, એટલે શાસ્ત્રમાં એનો ઉલ્લેખ નથી. શાસ્ત્રમાં તો શું છે, આપણે બ્રિંજલ છે, અંજીર છે, એ બધાનો ઉલ્લેખ આવે છે, પણ I will ask about strawberry. Yeah. એટલે કોઈ મારા સામને ખબર હશે મોટે ભાગે. સારું. ओके चेतल भाई, अभी आपने जो बताया कि गर्म पानी करके पिए तो ज्यादा बेटर है, तो अगर जिस दिन हम, जैसे आज मैंने कोई पचखान नहीं लिया है काशना या व्याशना का, बट इवन अदरवाइज मैं गर्म पानी करके पी रही हूँ, तो अगर मैं आज गर्म पानी पी रही हूँ तो मैं रात्रि भोजन नहीं कर सकती, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, ये बहुत क्या होगा रात के पानी का फिर? आई मीन आफ्टर सनसेट. नहीं, मतलब बोथ आर टोटली अनरिलेटेड. अभी तुम कोई भी जीवन में, अभी दिन में कोई भी पचखान नहीं है, पर फिर भी तुम बॉयल वाटर तो यूज कर सकती हो. अभी जैसे हमारे घर में इंडिया में एवरीवन यूजेस बॉयल वाटर. अभी रोज तो किसी लोगों को तप होता नहीं है, पर रोज बॉयल वाटर ही पीते हैं. तो पचखान लेने की जरूरत नहीं है बॉयल वाटर में, पर तुम्हारा बॉयल वाटर ना 9 आवर्स का काल रहता है. 9 आवर्स के बाद यू डिस्कार्ड. Yeah, but then what happens after sunset if you want to still drink water? Yeah, मतलब वो मतलब ओके ही है, मतलब या पर अगर 9 आवर्स का काल हो गया हो तो फिर वो मतलब सचित हो जाता है, वो अचित नहीं रहता है. तो तुमको जो सचित पीने का पाप लगेगा. Okay. Yeah. Oh, okay. Okay. ચૈતલ, એક હેલ્થની દ્રષ્ટિએ લાઈક this is a lot of I mean I have heard a lot of times ke like from other people કે તમે ફ્રેશ ખાઓ, તમે you know એ લોકો એવું કહે કે સલાડ ખાઓ ને you know like vegetables live હોવા જોઈએ તો તમને વધારે પોષણ મળે અને you know they are more healthy rather than you know which is you know the vegetables which are dead. તો લાઈક ભગવાને આપણને કેમ સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ એવું કીધું હશે કે you know like I always had that you know conflict કે એવું કેમ હશે? સો છે ને, મતલબ આમાં છે ને શું છે, મેઇન આપણો ધર્મ છે ને જનરલી જીવ હિંસાને રોકવા માટે છે અને ત્યાગ ધર્મ છે આપણો. એટલે છે ને મતલબ હેલ્થ વસ્તુ થોડી ગૌણ થઈ જાય છે. એટલે આપણે વિચારીએ કે કેટલા લોકો આર્ગ્યુ કરે, રાઈટ, કે ફિશ ખાવામાં તો આટલું બધું છે, રાઈટ, ઓમેગા 3 મળે, આ મળે, તે મળે, રાઈટ, બધું મળે અને વાત બરાબર હશે, મળે, એવું નથી કે ના મળે, મળતું હશે. પણ આપણો ધર્મ શું છે, આપણો ધર્મ તો યુ નો કમ્પેશનેટ ધર્મ છે, રાઈટ. આપણે જીવ હિંસા જેટલી ઓછી થાય એટલો ધર્મ છે. હવે એ વસ્તુ બરાબર છે, કદાચ હેલ્થ માટે સેલેડ માઇટ બી બેટર, રો ખાવાનું માઇટ બી બેટર, પણ એમાં જીવ હિંસા વધારે છે, પાપ વધારે છે. હવે છે ને, તમે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, આપણે હવે સાધુ મહારાજ લો, રાઈટ. હવે ભુવન ભાનુ મહારાજ સાહેબ છે, એમને તો 108 વર્ધમાન તપની ઓળી કરી છે, એટલે એમને 14 વર્ષ આંબેલ કર્યા. 108 વર્ધમાન તપની ઓળી એટલે ખ્યાલ છે ને, એક આંબેલ, 2 આંબેલ, 3 આંબેલ, 4 આંબેલ, એવી રીતે 107 આંબેલ, 108 આંબેલ, એવી રીતે. તો એમને 14.5 વર્ષ આંબેલ થયું. અને પછી આંબેલ પછી પણ એ છઠના પાને છઠ કરતા હતા, અને છઠના પાનામાં ખાલી રોટલીને પાણી વાપરતા હતા. છઠના પાનામાં શું વાપરે? ખાલી કોરી રોટલી ને પાણી. અને જીવનમાં કોઈ જ તકલીફ નહીં આવી શરીરમાં, એમને હેલ્થમાં એક પ્રોબ્લેમ નહીં આવ્યો. એમને આંખો પણ સારી હતી,
છેલ્લે 78 વર્ષની ઉંમરે પણ એ વાંચતા હતા. મતલબ મતલબ તમે તમે સમજો ધર્મ, મતલબ મતલબ આજે ને આપણો ધર્મ બહુ અલગ છે. આપણે છે ને મતલબ બહાર જે બધું સાયન્સ બધું જે પબ્લિશ કરે છે આપણે એમાં વધારે પડી ગયા છે. પણ આપણે છે આત્માની એકલી શક્તિ છે, આત્માની ઘણી શક્તિ છે કે આ બધા નાના મોટા બધું જ ઓવરકમ કરી લે છે, વિટામિન્સ મિનરલ્સ બધું જ. અને 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 બીજી વાત, મને છે ને एक प्रसंग याद आवे छे. लेट मी से इन हिंदी. तो मेरे को एक प्रसंग याद आता है. ये ना 100 साल पहले ये प्रसंग हुआ था, ये खंभात में. तो खंभात में वो एक आदमी थे उस समय, तो बहुत छोटे बच्चे, राइट. तो वो खंभात में वो छोटे बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और फिर वो 4-5 लोग खेल रहे थे. तो वहाँ पे एक साधु महाराज आए खंभात में. तो ये बच्चे तो जैन नहीं थे. तो ये साधु महाराज ने ये सब बच्चे को बुलाया, ये बच्चे तुम इधर आओ, राइट. तो सभी बच्चे आए. तो सभी बच्चे को 3 क्वेश्चन पूछा. तुमको हेल्दी होना है? सभी बच्चे ने बोला हाँ हेल्दी होना है. फिर तुमको जीवन में कोई रोग नहीं चाहिए? सबने बोला हाँ हमको तो कोई रोग नहीं चाहिए. फिर महाराज साहब ने पूछा तुमको एकदम लंबा जीना है, लॉन्ग? बोलता है हाँ हमको तो लॉन्ग जीना है. तो साधु महाराज ने बोला तुम ये 3 चीज करो. पहले तो तुम जितना भूख हो उससे कम खाओ. सेकंड, दिन में एक ही बार खाओ. थर्ड, तुम सिर्फ 2 द्रव्य का यूज करो. क्या 3 चीज? पहले तो तुम भूख है उससे कम खाओ. सेकंड, तुम दिन में एक ही बार खाओ. एंड थर्ड, तुम सिर्फ 2 ही द्रव्य यूज करो. 2 द्रव्य मतलब रोटली या साग या दाल या भात, वो 2 द्रव्य. तो फिर उसमें से 4-5 बच्चे थे, तो ठीक है 4-5 बच्चे ने 1-2 दिन तक किया और उसमें से 4 बच्चे तो निकल गए. पर एक बच्चा था, वो तो जैन नहीं था, पर एक बच्चा ने उसको अच्छा लगा ये चीज. तो उसने तो ये किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो 15 दिन तक साधु महाराज थे, तो 15 दिन तक किया. फिर साधु महाराज तो विहार करके चले गए. अभी वो आदमी फिर ना पूरा जीवन उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, पूरा जीवन कि रोज एकासना करने का, रोज 2 द्रव्य का एकासना करने का और भूख है उससे कम खाने का. तो वो आदमी लास्ट 5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई. वो 95 ईयर्स के थे. बोलते उनको कभी शरीर में सर्दी भी नहीं हुई, शरीर में एक टाइप का रोग नहीं आया, और वो सामयिक करते करते बैठे बैठे मर गए विदाउट एनी पीड़ा. उनको थोड़ा भी पीड़ा नहीं हुआ, शांति से समाधि में सामयिक करते करके मर गए, और जीवन में एक भी रोग नहीं. तो दिस डिफीट्स द साइंस. साइंस क्या बोलता है? यू ईट मोर टाइम्स. महाराज साहब क्या बोलते हैं? नहीं, ऑपोजिट, यू ईट लेस टाइम्स. साइंस क्या बोलता है? यू ईट मोर टाइप्स ऑफ फूड. ये खाओ इसमें विटामिन ए मिलेगा, ये खाओ विटामिन सी मिलेगा, ये खाओ इसमें जिंक मिलेगा. महाराज साहब ने क्या बोला? नहीं, सिर्फ 2 द्रव्य खाओ. तो हमारा धर्म तो उससे भी आगे है, साइंस है. साइंस ने सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट किया है कि कम खाओ, डाइटिंग करो. दैट इज द ओनली थिंग साइंस हैव एक्सेप्टेड. पर अभी 2 चीज तो साइंस इज सो फार अवे. मतलब साइंस विल एक्सेप्ट दिस. एक टाइम आएगा जब साइंस को पता चलेगा कि एक ही बार खाने से और कम खाने से ज्यादा फायदा है. सो दैट इज द थिंग. सो अंडरस्टैंड अवर धर्म कि ये सब विटामिन मिनरल सब कुछ छोड़ो, ये सब कुछ हमारा बॉडी प्रोड्यूस करती है और बॉडी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. Right, that actually makes sense. Wow. या मतलब ये तो मतलब खंभात के, मतलब मेरे को आदमी का नाम तो भूल गया, पर पापा को पता है. पर ना महाराज साहब पता नहीं है, क्योंकि वो आदमी को खुद को महाराज साहब नहीं पता है. तो कि महाराज साहब तो 15 दिन आए और उसके बाद चले गए. तो वो तो बच्चा था, बच्चा ने तो पूछा नहीं महाराज साहब को क्या नाम है. तो पूरी जिंदगी उन्होंने ये व्रत लिया, पर उनको पता नहीं कौन महाराज साहब थे. पर महाराज साहब की कृपा उन पे आ गई. सोचो, पूरी जिंदगी वो सामयिक, वो जैन बन गए. पूरी जिंदगी एकासना किया, सामयिक किया और समाधि मरण हुआ. या दैट इज द थिंग, राइट. तो मेरे ख्याल से भगवान का जो बोला है वो मार्ग पे चलते हैं ना, तो बॉडी के प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे. अभी ये महाराज साहब है, आज 100 कौन सा उपवास है? 120
118 120 માં ઉપવાસ છે ને 120 राइट। क्या क्या बॉडी में क्या, अभी मेरा भाई अभी मिलके आया 5 दिन पहले, अभी वंदन करके आया। वो महाराज साहब से मेरे भाई ने बात किया, तो वो महाराज साहब ने इतने उपवास में भी वॉल का सपोर्ट नहीं लिया। वो बैठते हैं वॉल के सपोर्ट के बिना। और फिर मेरे, ये ना इंटरेस्टिंग है, तो मेरे भाई ने पूछा महाराज साहब को कि तुम वॉल के सपोर्ट के बिना कैसे बैठ सकते हो इतने उपवास में, तो हंस हंस के पूछा, और महाराज साहब ने हंस हंस के जवाब दिया। तो महाराज साहब ने बोला, जब मैं छोटा था तो वो तो रत्नचंद्र महाराज साहब के शिष्य है, और रत्नचंद्र महाराज साहब भुवन भानु के शिष्य है। तो बोलता है, मैं सब छोटा था तब उन्होंने दीक्षा बहुत छोटी उम्र में ली थी, जब वो दीक्षित थे, तब वो ऐसे 1-2 तप करते थे, राइट, उपवास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक बार ऐसे कुछ 2-3 उपवास किए थे, और फिर वो एकदम थक गए, तो फिर वॉल के सपोर्ट पे बैठ गए। वो तो बाल मुनि थे, राइट, तो वॉल के सपोर्ट में बैठ गए। तो फिर भुवन भानु महाराज साहब ने बुलाया, हे इधर आ। तो महाराज साहब ने बोला, हाँ क्या है? तो भुवन भानु साहब ने बोला कि तुम ये वॉल के सपोर्ट में बैठ रहे हो ना, तो वॉल टूट जाएगी। तो तुम्हारे भार से वॉल टूट जाएगी। तो वो दिन से डिसाइड किया कभी वॉल का सपोर्ट नहीं लेने का। तो आज 120 उपवास में भी वॉल का सपोर्ट नहीं लेते। ये सब गुरु महाराज साहब की कृपा है। गुरु महाराज साहब ने तो टॉन्ट मारा उनको, पर उन्होंने मन में त्याग कर दिया कि मैं कभी वॉल का सपोर्ट नहीं लूंगा। और फिर ये सब कृपा आती है, फिर अपना आत्मा का शक्ति खुद ही जागृत हो जाता है इसमें। फिर कभी इतने उपवास में भी वॉल का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार महाराज साहब की आज्ञा का पालन, he is doing consecutive 120 उपवास, is that even possible? या पॉसिबल है ना, वही तो अभी तो, और ये 3rd टाइम कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी 2 बार 180 कर दिए। उसके पहले उन्होंने 93 किए थे, और 93 में पारना किया। अभी वापस उन्होंने 125 तक पहुंचे। इट्स पॉसिबल ना, अपने सामने ही है ना, अपने सामने ही है। It's amazing के I was talking with my sister other day કે આવું લાઈક હ્યુમનલી બી કઈ રીતે પોસિબલ છે કે કોઈ માણસ આટલા બધા ઉપવાસ કરે. સો she just suggested કે કદાચ probably આજના જમાનામાં બી દેવોની કૃપા હોઈ શકે કે દેવો કૃપા, અને પણ આમાં છે ગુરુ મહારાજની કૃપા વધારે કામ કરતી હોય છે. એટલે છે ને, આમાં શું છે કે આપણા આત્માની શક્તિ તો અનંત છે જ. મતલબ જસ્ટ રિમેમ્બર કે આપણો આત્મા તો અનંત શક્તિશાળી છે જ. એટલે આ છે ને, ખાલી આપણા કર્મ ક્ષયથી આ બધું ઉઘાડ થતો હોય છે. એટલે આ છે ને, ગુરુની કૃપા વધારે કામ કરતી હોય છે. દેવોની કૃપા કરતા પણ ગુરુની કૃપા એટલે ભગવાનની કૃપા. એટલે આમાં ભગવાન એટલે શું છે? એટલે ગુરુ એટલે ભગવાનના પટધર છે. એટલે ગુરુની કૃપા દ્વારા ભગવાનની કૃપા મળતી હોય છે ડાયરેક્ટ. એટલે આ બધું જે સાયન્ટિફિકલી પોસિબલ નથી લાગતું, પણ આ બધું પોસિબલ છે. એટલે હાઉ કમ લાઈક આપણા પણ કેટલા બધા લોકો સાયન્ટિસ્ટ પોતે જ હોય છે, તો why isn't anybody like looking at it and proving, જ્યારે મહારાજ સાહેબ આટલા મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરી શકે છે? ના એટલે observable અને ના આમાં તો ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટ મળવાયા હતા એમને. there are scientists in India, ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટ, એ લોકો 5 સાયન્ટિસ્ટ એ લોકો મળવાયા હતા, અને they talked in great details. અને આમાં શું છે કે ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ will believe, પણ હવે અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ તો કહેશે કે આ તો ખોટું જ છે, રાઈટ, એ તો કશું વાપરતા હશે રાત્રે. એટલે that is a problem. પણ ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ will believe. આમાં છે ને પછી ધર્મ પર શ્રદ્ધા હોય તો અમુક વિશ્વાસ કરતા હોય છે, પણ સાયન્ટિસ્ટ મતલબ આપણે ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટ એટલે જસ્ટ એવું પણ કરી શકાય, રાઈટ, કે અત્યારે આપણે બધા એમ માને છે કે ના તો થાય જ ના, તો if the scientists can also back it up કે ના આવી રીતે કરે છે જૈન મહારાજ સાહેબ, આવી રીતે કરી શકે છે, then people feel like, oh, it's possible. I don't know, just becomes more possible for people to કે કોઈ હિંમત કરીને થોડું વધારે કરે, ના બરાબર છે. પણ આમાં શું છે કે આ વસ્તુ એ મહારાજ સાહેબ કરે છે, પણ બીજા કોઈ કરવા જાય તો પોસિબલ નથી. હવે આપણા જેવા કરવા જાય, આપણે તો ગુરુની કૃપા પણ ના હોય જીવનમાં, અને આપણે કરવા જઈએ તો આપણે લાંબા થઈ જઈએ. બાટલા ચડાવવા પડે આપણને. એટલે આ બધું ને ગુરુની કૃપાથી થાય છે. એટલે આમાં છે ને, આઈ વિલ ગીવ યુ અનધર સ્ટોરી નહીં, એટલે સ્મોલ ઇન્સિડન્ટ. એક સાધુ મહારાજ હતા,
એમને જીવનમાં એક ઉપવાસ નહોતો થતો. હી કેનોટ ડુ ઇવન વન ઉપવાસ. હું નામ તો ભૂલી ગયો. તો પછી એ મહારાજ સાહેબને ગચ્છાધિપતિ જોડે વંદન ગયા. જયઘોષ સુરી મહારાજ સાહેબને વંદન કરવા આવ્યા એકવાર. તો એ મહારાજ સાહેબ એક ઉપવાસ કરીને તબિયત બગડી જાય. તો ગચ્છાધિપતિએ કીધું હાથ જોડ. એમને હાથ જોડ્યા કે માગસર શ્રમણનું પચકાણ તારે. શેનું? 30 ઉપવાસનું પચકાણ માસક શ્રમણનું. હવે ગચ્છાધિપતિએ કીધું અને એ મહારાજે 30 મતલબ આ લોકો તો શું છે, મહારાજ સાહેબ કીધું એટલે પતી ગયું. મતલબ એ લોકોને મનમાં બીજો વિચાર પણ ના આવે કે મળતી થશે નહીં થાય, કશું જ નહીં. એ ગચ્છાધિપતિએ કીધું હાથ જોડ અને ડાયરેક્ટ માસક શ્રમણનું પચકાણ આપી દીધું. અને માસક શ્રમણ તો એનું એટલું બધું સારું કર્યું, પછી તો એમને 51 માસક શ્રમણ કર્યા. કેટલા? વાવ. એટલે આ ગુરુની કૃપા છે. જો એમને એક ઉપવાસ નતો થતો, ઉપવાસ કરીને તબિયત બગડતી હતી, અને મહારાજ ગુરુએ કીધું માસક શ્રમણ કર, તો બધું જે બધા કર્મ હતા, અંતરાય કર્મ, ધીસ ઇઝ ઓલ અંતરાય કર્મ, અંતરાય કર્મ બધા નીકળી ગયા, બધા ઓટોમેટિક નીકળી ગયા ગુરુના કૃપાથી. એટલે આ બધી વસ્તુ છે. એટલે આપણે કરી ના શકીએ આ બધું. તમે ગુરુની આજ્ઞા લઈને કરો. તમે ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ અને પછી કહો મને પચકાણ આપો, તો તમારે થશે. તમે પોતે પચકાણ લઈને કરવા જાઓ તો ના થાય. तो Amazing. हाँ चेतन भाई, जब हम यहाँ बैठ के कोई तप करने का सोचते हैं, लेकिन फिर ये भी इच्छा होती है कि गुरु महाराज से पचखान ले, लेकिन फिर गुरु महाराज तो फोन से पचखान देते भी नहीं, राइट? तो फिर हमारी इच्छा हो तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, मतलब यहाँ पे अभी छोटा मोटा पचकान तो तुम खुद ले लो, पर अगर मैं बोलता हूँ कि बड़ा पचकान करना हो, जैसे तुमने 28 किया, तो ऐसे पचकान अगर पॉसिबल हो तो गुरु महाराज से लो. मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर 1-2 उपवास तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, उसमें गुरु महाराज साहब को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है. पर तुम 28 करने वाले हो, या फिर उपधान करने वाले हो, या फिर सिद्धि तप करने वाले हो, या कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो, तो वो तब पचकान तो गुरु महाराज से भी लेने का. शमणी जी કરી શકે? हाँ કરી શકે. समनी जी કરી શકે. शमणी जी are here, right? So they can do. Yeah, definitely. Okay. ચેતુભાઈ, મને એક થોડો અનરિલેટેડ ક્વેશ્ચન હતો. તમારો લેક્ચર પતે, I was waiting for your material to be done, but just like yeah. તો હું તમને પૂછું. એટલે મને બીજું એવું મને ઓલવેઝ ક્વેશ્ચન થાય છે કે આપણે છે ને કેટલું બધું ધ્યાન રાખીએ છીએ કે એક નાનામાં નાના જીવને પણ વી આર બીંગ સો કેરફુલ અબાઉટ ઇટ. પણ અને એમાં કેટલું બધું આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સમાં લખ્યું પણ છે કે આવી રીતે હિંસા થાય, આ રીતે, લાઈક ઇટ્સ ઇન સો મચ ડિટેલ, રાઈટ? પણ આપણે ઘણા વખત આ રીતે હિંસા વી આર ડુઈંગ હિંસા ટુ આર ફેમિલી મેમ્બર્સ, આર લાઈક આપણા નેબર્સ, જેની સાથે આપણે ડીલિંગ કરીએ છીએ, જે they are પંચેન્દ્રિય જીવ, આપણે એમને બહુ મન દુખાવે છે, એમને બહુ હર્ટ કરીએ છીએ, પણ એનું કોઈ મેન્શન નથી કે છે. એટલે આપણે ભાવનું જયારે કરીએ તો ભાવ, ઇટ સીમ્સ મોર કે ભાઈ તમારે ભાવથી પૂજા કરવાની એમ, but they are not saying, or I don't know, is there any mention anywhere around our behavior to not hurt other people? ના, ચોક્કસ. અતિચારમાં આનું ઘણી જગ્યાએ મેન્શન છે. હા, એટલે છે ને આપણે એકવાર અતિચારનો આખો મિનિંગ લઈશું, પણ અતિચારમાં તો ઘણી જગ્યાએ આ વસ્તુનું મેન્શન છે. હા, એક જ મિનિટ. મારો અવાજ સંભળાય છે? યા. ઓકે, મને એક એકો આવતો હતો. ઓકે, તો આમાં મને એકો આવે છે ચૈતર. એટલે રિપીટ થાય છે. એક જ મિનિટ. હલો. અત્યારે બરાબર છે? હા, હવે બરાબર દેખાય છે. એટલે કદાચ કોઈ માઇક ચાલુ હશે. હા, સંભળાય છે હવે બરાબર? હા, હવે બરાબર સંભળાય છે મને. ઓકે, હા, એટલે છે ને આપણે જે અતિચારમાં જેવી રીતે આપણે આવે છે ઈયલોએ પડલોએ જીવ્યા આસંસ પહોગે પંચવિયારો માઉજ્જ મરણંતે, રાઈટ? તો એમાં આવે છે કે આપણે આ ભાવમાં સુખ સૌભાગ્ય બધું વાંચ્યું, બીજાના દુઃખની ઈચ્છા કરી કે બીજા સાથે ખરાબ બનાવ કર્યો, એટલે એમાં પણ આવે છે. સંલેષના તપના અતિચારમાં આવે છે. પછી આપણે આમાં પણ આવે છે. એટલે 2-3 જગ્યાએ આ વસ્તુનું મેન્શન છે.
પછી આપણે અભ્યંતર તપમાં પણ આવે છે. અભ્યંતર તપમાં શું આવે છે? આર્તર રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાયા, રાઈટ? આર્તર રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાયા એટલે આ બધું આર્તર રૌદ્ર ધ્યાન થઈ ગયું. તમે કોઈની જોડે ઝઘડો કર્યો, કોઈનું ખરાબ વિચાર્યું, કોઈને મન દુખાયું, બધું જ આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન છે. એટલે અભ્યંતર તપમાં આપણે બોલીએ છીએ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાયા, રાઈટ? તો એમાં બધું આવી જાય છે આ બધું. ઓકે, પણ આમ લાઈક હવે કેવું છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ વાયલન્સ, પણ મને એવું ખ્યાલ ના હોય કે અરે ભાઈ હું પાણી ઉકાળીને પીવું, લાઈક બધું, બીકોઝ મને એવો વિચારે ના આવે કે આ તો સચિત છે, રાઈટ? એટલે સ્ક્રિપ્ચર્સમાં એવું લખ્યું છે ડિટેલમાં કે તમારું ઇટ ડ્રોઝ યોર અટેન્શન ટુ ઇટ કે બી કેરફુલ, ડોન્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ? સો એવી રીતે લાઈક એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા હોય કે ભાઈ તમે આમ કરો, તમે આવું બોલ્યા હોય કે આવું કંઈ કર્યું, લાઈક વિથ એક્ઝામ્પલ્સ ઇન અ વે. સો your attention goes, oh, I'm not supposed to do this, to like be mindful of it, right? So not. હા, એટલે હું વિચારું છું કે આપણે અતિચારમાં, એટલે આપણે અતિચાર છે ને ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં છે, એટલે ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે હું વિચારું છું આપણે But it's just atichar is where you remember, like there isn't like any like જીવ વિચાર. કેવું જીવ વિચાર આખો ગ્રંથ છે જેમાં બધી રીતનું તમને એવું કરે છે, તો એવું nothing like that for ભાવ. નહીં, ગ્રંથ તો બહુ છે. ગ્રંથમાં તો જેવી રીતે ગ્રંથ, મતલબ આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ કે કયા સૂત્રમાં છે, પણ આપણે દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શન કરીને ગ્રંથ છે. એટલે એ દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શનમાં 68 ટાઈપ્સના દુર્ધ્યાનનું વર્ણન છે. અને એ 68 ટાઈપના દુર્ધ્યાનમાં આ બધું જ આવી જાય છે. એટલે આઈ થિંક we'll take a topic. Yeah, that's really દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શન. કોની રિપીટ થાય છે પાછું? પણ આપણે દુર્ધ્યાન, I think it's my phone, I'll mute myself. એટલે આપણે દુર્ધ્યાન સ્વરૂપ દર્શન ઇઝ અ વેરી ગુડ ટોપિક. એમાં છે 68 ટાઈપ્સના દુર્ધ્યાનનું વર્ણન છે શાસ્ત્રમાં, અને એમાં એકદમ ડિટેલમાં છે, એકદમ ડિટેલમાં. તો આપણે તો ઘણા શાસ્ત્રો છે, એટલે મતલબ there is no limit on what we have, પણ we will take that topic, 68 ટાઈપ્સના દુર્ધ્યાન. Yeah, sure. એક બીજું ક્વેશ્ચન હતું. આપણે બેકયાર્ડમાં વેજીટેબલ્સ ને ફ્રૂટ્સ ટ્રીઝ ઉગાડીએ, ઇઝ ધેટ ઓકે? ઇઝ ધેટ એની કાઇન્ડ ઓફ પાપ કે નોટ સપોઝ ટુ ડુ ઇટ? યા, એટલે જનરલી તો ના પાડી છે શાસ્ત્રમાં. શાસ્ત્રમાં તો ઓલ ધ વેજીટેબલ્સથી માંડીને ગ્રાસથી માંડીને બધું ના પાડી છે. એટલે એમાં પાપ તો છે જ. હા, પાપ તો છે જ. એટલે આપણે જનરલી શું હોય છે કે આપણે શ્રાવકો, જે આપણે જૈનો છે ને, તમે વિચારો, જૈનો કોઈ પણ ફાર્મિંગમાં નથી. આપણે ફાર્મિંગમાં કોણ છે? પટેલો છે. એટલે તમે જો વિચારો કે જૈનો they don't have any farmlands in India, કારણ કે પહેલેથી we were not doing this. We were not growing vegetables, we were not selling vegetables. આપણે આ બધું કરતા નતા, કારણ કે આપણે એનો ત્યાગ લખ્યો છે શાસ્ત્રમાં. એટલે હા, કારણ કે એમાં તો સચિત વસ્તુ તમે ગ્રો કરો છો અને પછી સચિત વસ્તુ વેચો છો, રાઈટ? એટલે ધેટ ઇઝ અ પાપ. એટલે આપણે તો જનરલી વી હેવ ટુ એવોઇડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ, કારણ કે તમે ગાર્ડનિંગ કરો તો માટીના જીવો બધું જ, રાઈટ? તો આપણે તો જ્યાં સુધી પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી વી હેવ ટુ સ્ટે અવે ફ્રોમ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. પણ હવે જેટલું થાય એટલું કરવાનું, બાકી તો it's very difficult to stop everything. જો કડી પત્તો હોય and it's like totally organic, આપણે like ખાલી મટ્ટી જ નાખીએ છે and પાણી જોઈએ એના માટે. It's not like બહુ ફર્ટિલાઇઝર કે કાંઈ જોતું હોય. So is that like okay, doable? ના, બરાબર છે તમારી વાત. હવે તમે વિચારો કે હવે કડી પત્તામાં તો કદાચ ઓછું પાપ છે, આપણે તો ગ્રાસમાં વધારે પાપ છે, રાઈટ? આપણે તો ગ્રાસ તો ઇટ્સ ટોટલી યુઝલેસ. અને એટલે આપણે કડી પત્તા તો આપણે પોતાના માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, કે આપણે ઇવન મેડિસિનલ વેલ્યુ માટે યુઝ કરતા હોઈએ. એટલે કડી પત્તામાં તો ઘણું ઓછું પાપ છે, પણ સૌથી મોટું પાપ તો ગ્રાસ છે. અચ્છા. યા ગ્રાસ પર તમે ચાલો, ગ્રાસની તો જરૂર જ નથી પહેલા તો. હા, રાઈટ. એટલે એ બધું પાપ મોટું છે. ગ્રાસને કાપવું પડે, એમાં તમે સ્પ્રે કરવું પડે, બધું વીડ્સના ગ્રોથ થાય, બધું દવા નાખવી પડે, વીડ્સને મારવું પડે. એટલે એ બધા વધારે પાપ છે. તમે તો કરી પત્તા તો શું, તમે એકલું તમે કશું તોડો નહીં, એ ટ્રી શાંતિથી ગ્રો થાય, એટલે એમાં ઓછું પાપ છે એ બધામાં. એટલે ખાલી કડી પત્તો નહીં, બટ લાઈક યુ નો અમે ભીંડા બી ઉગાવીએ કે મરચી ઉગાવીએ, ઇઝ ધેટ ઓકે? ઇઝ ધેટ એટલે એ બધામાં ઓછું પાપ છે, ગ્રાસ કરતા ઓછું પાપ છે. તમે અપેક્ષાએ વિચારો તો ગ્રાસમાં વધારે પાપ છે.
કારણ ગ્રાસમાં તો તમે લોન મોર ચલાવવું પડે, રાઈટ? હા એટલે ગ્રાસમાં ઘણું મોટું પાપ છે. અચ્છા અચ્છા ઓકે This all are even much smaller paps આ બધા. અચ્છા પણ પાપ તો છે જ. પાપ તો આપણે દરેક ક્રિયામાં પાપ તો આપણે કર્મનો આશ્રવ તો થતો જ હોય છે દરેક ક્રિયામાં. હા બટ લાઈક ઇઝ ઇટ મોર પાપ દેન બાઇંગ? લાઈક કડી પત્તો આપણે સ્ટોર થી બાય કરીએ ભીંડા ને વેજીટેબલ્સ, ઇઝ ધેટ મોર ઓર લેસ? ના એમાં મોર પાપ છે, કારણ કે એમાં શું છે, તમે બહારથી લો તો તમે જેટલું જોઈએ છે એટલું જ લો છો. તમે 5 ટામેટો જોઈએ છે તો 5 ટામેટો જ લો છો, પણ તમે ગ્રો કરો તો તમારે તો એક્સેસમાં ગ્રો થાય. હા તો એક્સેસમાં ગ્રો થાય તો તમે તો પોતે તો યુઝ કરો પણ બીજાને પણ આપો, રાઈટ? તો તમે એનું પણ પાપ લાગે. એટલે ગ્રોઈંગમાં તો વધારે પાપ છે જ 100%. તમે ખરીદો તો બહુ ઓછું પાપ છે, કારણ કે તમે જેટલું યુઝ કરવાના છો એટલું લેવાના છો અને એટલું તમે યુઝ કરી લેવાના છો. હા ઓકે હા રાઈટ ઓકે ગોટ યુ थैंक्स. ओके चेतन भाई, आपने जो अभी बताया कि ग्रास कटिंग में बहुत ज्यादा पाप लगता है, राइट? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं पूरे लॉन को लेट्स से कंक्रीट में कन्वर्ट कर दे और एक बार से पूरा ग्रास निकाल दे, तो इज दैट ओके? डेफिनेटली, मतलब ऐसा ही करना चाहिए. मतलब हमने तो कोट्स मांगा था पर वेरी एक्सपेंसिव था, फिर हमने अनफॉर्चुनेटली किया नहीं. पर ना मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पहले तो तुम आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो, राइट? तो आर्टिफिशियल ग्रास पूरा ग्रास जैसा ही दिखता है और उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन मतलब उसको तो इट्स आर्टिफिशियल ग्रास, उसको तो कुछ पूरा अचित ही है, मतलब इट्स अ डेड थिंग, राइट? तो एक तो आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो या फिर कॉन्क्रीट या ऐसा कुछ लगा सकते हो, पर इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और कहीं कहीं पे तो परमिट भी नहीं मिलती है कि आप पूरा उसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज फाउंडेशन के लिए अच्छा नहीं होता है. या कंक्रीट का तो शायद नहीं मिलेगा, पर आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो. पर इट्स आर्टिफिशियल ग्रास का हमने कोट मांगा था, $30,000 बोला था हमको. ओके या बट देन आर्टिफिशियल ग्रास डालने से एटलीस्ट लॉन को पानी वैसे मिल जाएगा और तो फाउंडेशन को हिट नहीं होगा, लाइक. हाँ फाउंडेशन को कुछ नहीं होगा. या मेरे नेबर ने कंक्रीट करवाया है पूरा बैकयार्ड में पूरा, तो उसको $20,000 का खर्चा हुआ था, लेकिन सिर्फ पिछला हिस्सा उसने पूरा कंक्रीट करवा दिया. सो लेकिन मतलब साइडवेज जो थे वो उसमें उसने सिर्फ पत्थर डाल दिए वहां पे. So that whole project costed him. I was asking about it because even I was thinking about removing grass to avoid hinsa. But like you said, that whole project was close to $20,000. So it was coming out very expensive. या हमारा भी वही था, एक्सपेंस ज्यादा है. या मतलब करो तो अच्छा ही है, इसमें तो ऐसा ही है, पैसा खर्च करके भी. ओके और यार्ड में जैसे थोड़े से वो थॉर्नी प्लांट्स वगैरह है और ये सब एक निकाल ली थे एक बार में, तो इज दैट ओके? नहीं मतलब प्लांट्स को अभी जो है उसको मारने का नहीं, प्लांट्स को. ओके या मतलब तुमने ऑलरेडी ग्रो किया है, उसको कभी मारने का नहीं. वो तो या उसमें बहुत बड़ा पाप है. उसको अभी तुमने ग्रो किया है तो उसका तुम टेक केयर करो. वो तो जीव है ना, जैसे हमारे घर में अगर कोई भी हो एनिमल्स या जो भी, उसको तुम टेक केयर करते हैं, राइट? तो ऐसे ही प्लांट्स को यू हैव टू टेक केयर. एक बार तुमने ग्रो किया है तो यू हैव टू टेक केयर. ओके लेकिन जो थोड़ा सा मल्च वाला साइड है उसमें जो थोड़े थोड़े ग्रास और वीड्स आते हैं, तो इज दैट ओके टू रिमूव दैट पार्ट? क्योंकि ताकि बार बार उसकी ट्रिमिंग ना हो और फिर बहुत ज्यादा फैलने लगता है, फिर बहुत ज्यादा उसकी ट्रिमिंग होती है. या अभी हमारा लाइफ ऐसा हो गया है ना कि देयर इज नो ऑप्शन, राइट? टू बी ऑनेस्ट, अभी जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है. पर ओनली थिंग ना, मतलब बुक में लिख के आलोचना ले लेने का, जैसे तुम अगर कभी मेरे को भाव आलोचना का टॉपिक लेना है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर तो पूरा शास्त्र है भाव आलोचना पे. तो पर कभी हम वो टॉपिक लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे कि कौन से पॉइंट्स और कैसे कैसे मेंशन करने का गुरु महाराज साहब को, उस पर पूरा बुक है. पर वो भाव आलोचना में अगर तुम कभी लो तो ये सब लिख देना. या तो उसमें ना कभी आलोचना ले लो तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़े पाप से, स्पेशली ग्रास का कटिंग और वो सब. राइट. या तो ये पाप सब अपने साथ आए नहीं, यहाँ पे उसका आलोचना हो जाए. यस. भाव आलोचना के फॉर्म्स महाराज साहब यहाँ बेचते हैं, राइट? भाव आलोचना ऐसा है ना कि वो गुरु महाराज साहब के साथ पर्सनली करना पड़ता है.
और इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। जनरली ना वो 3-4 घंटे लगते हैं महाराज साहब के पास बैठने, और महाराज साहब को तुमको टाइम देना पड़ता है, और 3-4 घंटे तो मिनिमम रखते हैं। और ये जनरली आचार्य महाराज साहब के साथ ही लेना होता है, और कोई उपाध्याय और साधु महाराज के साथ जनरली नहीं लेते। यू हैव टू गो टू आचार्य महाराज साहब। और आचार्य, क्योंकि इसमें क्या है, भावालोचना में जो साधु महाराज होते हैं ना, उनके भी गुण देखते हैं। वो उनका एक गुण है गंभीरता, क्योंकि हमारे ऐसे पाप होते हैं ना कि हम साधु महाराज साहब को बोले तो वो पाप को वो इवन सुन नहीं पाएंगे। तो आचार्य महाराज साहब की वो क्षमता होती है, वो गंभीर होते हैं, उनका एक गुण गंभीरता है। तो वो गंभीर होते हैं, वो ये सब पाप सुनते हैं और उनको कुछ विचार भी नहीं आते हैं, उनको सिर्फ तुम्हारे प्रति दया आता है, करुणा आती है। तो वो इसलिए भाव आलोचना यू हैव टू ऑलवेज गो टू, और आचार्य महाराज ही करते हैं, साधु महाराज के पास जाओगे तो ना बोलेंगे। या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे आचार्य महाराज होते हैं सिर्फ वो ही भाव आलोचना के फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वरना वो नहीं देते, राइट? नहीं देते। या मतलब यू कैन नॉट गो टू साधु महाराज या उपाध्याय महाराज, यू हैव टू गो टू आचार्य महाराज साहब। ओके। या वो लोग ना ही बोलेंगे, वो लोग खुद ही ना बोलेंगे। तो फिर जैसे हम लोग यहाँ पे है, लेट्स से हम लोग इंडिया अगर नहीं गए कभी, लेकिन फिर भी भाव आलोचना लेने की इच्छा हो, तो फिर अगर नहीं गए वहां पे तो फिर कभी ले नहीं पाएंगे, राइट? तो फिर नहीं, आई थिंक तो ले पाएंगे। अगर तुम्हारा ऐसा सिचुएशन हो कि लाइफ में कभी इंडिया जाना ही नहीं है, तो विल फाइंड आउट वे। मतलब अगर तुमको ऐसा हो तो बोलना, मतलब कोई महाराज साहब विल हेल्प, कोई आचार्य महाराज साहब कांटेक्ट में तो काफी महाराज साहब है, तो समवन विल हेल्प। पर मतलब ऐसा तो होपफुली सिचुएशन नहीं आया कि कभी इंडिया नहीं जाओ। डेफिनेटली नहीं, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट या अगर किसी को ऐसा हो, स्पेशली यूएस बॉर्न और वो लोग हो जो कभी इंडिया जाने वाले नहीं हो, तो मेरे को बोलना, और तो फिर वी कैन मेक अरेंजमेंट्स उसका। राइट, ओके, थैंक यू। ओके, तो फिनिश कर दे। ओके, तो सर्वमंगल कर देते। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधान सधर्मम जैनम जयति शासनम। जीनाज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। થેન્ક યુ ચૈતલ, સો મચ. આટલું બધું લેટ થઈ ગયું, પણ થેન્ક યુ સો મચ. ના થેન્ક યુ. હા, આમ તો શનિવાર છે એટલે સારું. થેન્ક યુ. પણ તું ટાઈમનો ભોગ આપે છે એટલે થેન્ક યુ. ના ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ ચેતનભાઈ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર.